डन हो गया ना? मुझे आदत तो नहीं होगी ना सर 2 मिनट रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पेपर 1 हम लोगों ने फिनिश किया था, ठीक है। आई थिंक प्रीलिम्स देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन तो वहीं से आ गए जो हम एंशिएंट इंडिया में डिस्कस कर रहे थे, मिडिएवल में डिस्कस कर रहे थे, रूलर्स के ऊपर जो क्वेश्चन आए थे। सो व्हाट इज माय प्लान फॉर दिस वीक फर्स्ट ऑफ ऑल we'll have 2 lectures on modern India, okay. Today and tomorrow we'll have 2 lectures for modern India. Then we have 2 lectures for world history or modern world. This is my plan for paper 2, to briefly introduce all the topics which are part of your syllabus. This is starting from the arrival of the Europeans. हर साल एक क्वेश्चन यूपीएससी वहां से प्रीलिम्स में पूछती है। इस बार देखा था पोर्चुगीज पे क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था, तो वो सारा यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। देन so we'll have around 4 classes for these two combinedly. Then on Saturday we're going to have a strategy session. Saturday को सारा जो strategy है, how I'm going to plan for next 4.5 months, पूरा जो लेक्चर प्लान है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी की सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करें। स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे आपकी रेगुलर 6 days a week क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो जितना भी प्री फाउंडेशन वगैरह, जितने भी ऑनलाइन बच्चे एडमिशन लेके घर से देख रहे हैं, क्लास में आने का टाइम आ चुका है, ठीक है। So this is the time where we begin, because I think the prelims result will also be out tomorrow or day after tomorrow. तो broadly इस वीक आ जाएगा। जितने बच्चे, all of you who are watching these pre foundation classes, if you wish to become part of the history option, this is your time, ठीक है। हम बिल्कुल अब रेडी हो चुके हैं। So now let us start the first topic, modern India. What is the meaning of the word modern? हर कोई पूछता है what's the meaning of the word modern. Modern India तो बोल दिया हमने, what is the meaning of the word modern? What is modern? If anybody asks you what is modern, what will you say? नहीं मतलब फिर भी कॉमन बड़े बड़े वर्ड छोड़ दो, एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो सब छोड़ो, बेसिक थिंग्स, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मॉडर्न? Technology can be one aspect of it, but not this technology. Like if I'm saying I'm a modern man, does that mean only I know about technology? What's the meaning of? So in general, modern means that we follow certain ideas which are accepted in the current world with respect to political, social, economic, religious, as well as scientific standards. Is that correct? Like today, if India says India is a modern polity, why are we considered as a modern polity? Modern polity किस basis पे बात करेंगे? Please try to understand. If we have rule of law, if we have democracy, if we have a constitution, आपका पूरा polity का subject क्या है? It's nothing but that's the idea of modern with respect to politics. है ना? तो polity क्या है इंडिया के अंदर? Society. Try to understand what's the meaning of a modern society. Society which is based upon equality. Society which respects each other, which believes in justice. That is the meaning of a society which is based upon which ideas? Modern ideas. देखिए, जब भी हम वर्ड मॉडर्न यूज करते हैं, you have to always first look towards Europe, because in Europe there are two very important phenomena. First, there was a scientific revolution. This scientific revolution was led by famous scientists, like all of you know their name also, like Newton. Everybody knows, ठीक है, हर कोई जानता है न्यूटन के बारे में। तो व्हाट वाज न्यूटन फेमस फॉर? ग्रेविटी वाला तो ठीक है, बट प्रिंसिपली किस चीज के लिए फेमस है? सिर्फ फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए फेमस थे वो। व्हाट वाज ही प्रिंसिपली फेमस फॉर? या कोई भी साइंटिस्ट किस चीज के लिए फेमस होता है? बेसिक चीज क्या होती है ऑफ साइंस? Yes, certain discoveries that they are done. More importantly, they explain the world on the basis of certain principles.
They don't take the support of the God. They don't take the support of some religious ideas with respect to that. The most important thing which all of you need to understand is that scientific revolution started in Europe in 16th and 17th centuries. Okay, 16th and 17th centuries, and it became responsible for a phenomena which is known as enlightenment. Now there are lots of ideas about enlightenment, but अगर बहुत ही basic level पे सोचोगे तो what is enlightenment? Enlightenment is about self-confidence, the ability to work independently. That's the meaning of enlightenment. एक philosopher थे Immanuel Kant. Immanuel Kant said, what is enlightenment? He said it's nothing, it's a self-confidence. Work independently. How when can you work independently? When you have certain ideas. When you are confident about yourself, then only you can have the enlightenment. Right? So what is required to be understood? Europe went through a scientific revolution, and then we see the emergence of enlightenment ideas. These ideas eventually came to India with the arrival of Europeans. With the arrival of Europeans, all such ideas, they came to India. Like all of you know, printing press, it was introduced for the first time by the Portuguese. It was British who established a modern administration in India. With the arrival of the British, we also see the beginning of the social reforms. Like we have these major leaders in India, Rajaram, Mohan Roy, Ishwar Chandra, Vidyasagar, all of them. They were the one who ensured that India should become a new kind of a society, which should not be based upon medieval values. Medieval values का मतलब क्या है? बहुत सारे social levels थे. Tradition of sati, child marriage, all those kinds of things, they were required to be stopped. Similarly, economic system. India was largely an agrarian country. So we needed modern form of production system. उसको हम क्या बोलते हैं? Industrial revolution. वो पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, and from England we got the ideas, and those ideas was eventually implemented in. But since British were having a colonial rule. Colonial rule का मतलब क्या होता है? That they were using us for raw material, and they were using our market for selling their goods. That's why India's economic level of achievement was less. आज भी हमारी सबसे बड़ा वीक क्या है? We have agriculture, relatively good. We have service sector, which is good. सबसे ज़्यादा वीक क्या है? Manufacturing और industry. वे ब्रिटिश छोड़ के गए हैं, legacy है उनकी. Didn't want India to become an industrialized country so that they can rule us for a very long time. Similarly, with respect to religion, India, if you see India was having the multiple religions. Yes. उन्होंने ब्रिटिश ने इंडस्ट्री लगाई नहीं है ऐसा, समझो. वहां 18th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बट इंडिया में न्यू इंडस्ट्रीज कब इंट्रोड्यूस की गई? मिड ऑफ 19th सेंचुरी. और वो भी घूम फिर के कोई बहुत ज्यादा हैवी इंडस्ट्री नहीं. कॉटन मिल्स, जूट मिल्स, दीज वर द थिंग्स व्हिच स्टार्टेड इन इंडिया. तो और जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मतलब जो टाटा ने, जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज हैं, ये सब 20th सेंचुरी की बिगनिंग से ही रिलेवेंट बने. तो टिस्को का प्लांट जाके 1907 के आसपास लगा. तो इंडिया में एक चीज बहुत वीक रह गई है, दैट वाज इकोनॉमी. ठीक है, 25% के आसपास हम वर्ल्ड जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया करते हैं इन द प्रीवियस काइंड ऑफ इकोनॉमीज, जो 18th सेंचुरी से पहले की बात है, 17th सेंचुरी. बट टिल ब्रिटिश हमें यूज करते रहे, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वाज वन एरिया where we underachieved. Religion, all of you need to understand, we had multiple faiths, and every religion has certain challenges. Like if you see the case of Hinduism, the issue of sati was there, the issue of child marriage was there, polygamy was a certain issue. So all those things were required to be changed. The issues with respect to caste system, the lower caste, they were not allowed to have a free life. They were subordinated to the upper caste. So वो सारी चीजें क्या हुई problematic? Religious life. Or finally, scientific. India also was required to move forward with what? With scientific developments. But since हम किसके अंडर थे? British. ये चीज इतनी आगे पहुंची. So we underachieved in economy, we underachieved in science. Largely why? Because these areas were in conflict with the British rule. तो ना तो हमें finance provide करने वाले थे,
neither they would appreciate the rise of any kind of scientific knowledge such. तो इंडिया के अंदर जो मॉडर्न वर्ड यूज करते हैं दैट इज पार्शली ट्रू, इट इज पार्शली ट्रू। आज भी हमारी साइंस क्या जुगाड़, अगर दो चार ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ दोगे, लाइक इसरो को छोड़ दो, ठीक है, डीआरडीओ भी टू ओनली टू सम एक्सटेंट, मैक्सिमम कहाँ से आता है हमारे सारा आज का डिफेंस प्रोडक्शन, कहाँ से आता है? रशिया से आता है, फ्रांस से आता है और इवन यूएसए से आता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में सब पता चल गया कहाँ से क्या आता है ना, सबको पता चल गया कहाँ से क्या आता है। तो व्हाट डज दैट टेल अस? इन द फील्ड ऑफ साइंस वी आर स्टिल बिलो पार। अब एआई में देखिए ना, लाइक टुडेज जो अभी लेटेस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इट इज ड्रिवन बाय व्हाट? इट इज ड्रिवन बाय एआई। एंड एआई में हम कहाँ हैं पता नहीं, हमारा एआई एस्ट्रोटॉक चल रहा है ना, हमारा वो चल रहा है बस। वहीं अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूएसए, तो सारी की सारी लीडिंग जितनी भी कंपनीज है कहाँ से? यूएसए से। एंड इफ यू सी विद रिस्पेक्ट टू चाइना आल्सो, एटलीस्ट दे आल्सो हैव लॉट्स ऑफ इनोवेशंस। ई व्हीकल्स देखो, अब ई व्हीकल्स में इंडिया भी रिलेटिवली काफी पीछे, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं टेस्ला, इनफैक्ट टेस्ला से बहुत ज्यादा अच्छी कंपनीज कहाँ पे चल रही है? चाइना में। द बेस्ट ऑफ द ई व्हीकल्स आर मेड इन चाइना। तो बस मैं पर्सपेक्टिव आपको ये देना चाह रहा हूँ कि द वर्ड मॉडर्न इट मीन्स द राइज ऑफ सर्टेन आइडियाज which are accepted in today's world, and these are in the field of polity, society, economy, religion as well as ethics. So society which was under the Mughals, which was having certain challenges in all the fields, that was inherited by the English or the British, and we see certain changes in that. Those changes, they are known as the beginning of modern India in a real sense. ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया अगर कोई तुमसे पूछ भी ले तो बस सीधा सीधा ये जवाब देना है that the application of modern political, social, economic, religious and scientific ideas, and which came from where? Which came from the West. Which came from the West is the beginning of the modern. जैसे हमारे यहाँ आपने कीवर्ड सुना ही होगा विद रिस्पेक्ट टू राजा राम मोहन रॉय, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्यों बोलते हैं उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? व्हाई इज ही कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? हाँ, बहुत सारे, जैसे सोसाइटी का सबको पता है कि भाई ही वाज रिस्पांसिबल फॉर अबॉलिशन ऑफ सती, लेकिन सिर्फ वो नहीं था, ही वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल एजिटेटर ऑफ इंडिया। बहुत सारी डिमांड्स थी उनकी कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इंडिया के हिसाब से बनाओ, जितना भी जूरी वगैरह है सिस्टम वो यहाँ पे अप्लाई करो, परमानेंट सेटल सिस्टम के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, जो भी टैक्स कट उसको कम करो। तो लॉट्स ऑफ सच डिमांड्स वर पुट फॉरवर्ड बाय हिम। तो ही वाज अ पर्सन हु विद अ कंप्लीट पर्सनालिटी, है ना। बहुत सारे लिटरेचर को उन्होंने क्या किया? ट्रांसलेट किया so that everybody can have access to knowledge. That's why we need to understand this point, that the word modern is largely about the new set of ideas which were already there in Europe because they had the scientific revolution. But these ideas became prominent in India starting from second half of 18th century. And 19th century was the time when all of these were changed at a remarkable level. Just to give you an example, education का बात करें, हमारी पुरानी एजुकेशन किस चीजों पे बेस्ड थी? इट वाज बेस्ड अपॉन रिलीजन, रिलीजन पे बेस्ड थी, ठीक है। बट द ब्रिटिश मेड इट मोर सेकुलर इन नेचर। लॉर्ड मैकोले आके कहते हैं कि भाई इंडिया में तो कुछ भी नहीं है, किसी काम के एजुकेशन सिस्टम नहीं। वो एंटायरली ट्रू नहीं था, बट दैट्स व्हाट ही सेड। ही सेड दैट व्हाई वी आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियन सिटीजन हु आर इंडियन इन ब्लड एंड कलर। वो इंडियन तो होंगे दिखने में, ठीक है, खून भी उनका इंडियन होगा, बट दे विल बी यूरोपियन इन टेस्ट, इंटेलेक्ट, मोरल्स, हमारे हिसाब से जिंदगी जिएंगे। That's why the education policy of us was changed from 1835. इस तरीके से हर छोटे छोटे फील्ड में कुछ कुछ इंटरवेंशन किए इन लोगों ने। तो आज का जो हमारा सबसे पहला डिस्कशन था वही था। बाद में जब मॉडर्न इंडिया करेंगे डिटेल में, आफ्टर मिडिएवल पार्ट बहुत बाद में आएगा, आई थिंक 2 महीने बाद आएगा लगभग, तब हम बाद में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट आई होप एक छोटा सा आइडिया मिल गया व्हाई डू वी कॉल इट मॉडर्न इंडिया, बिकॉज नए आइडियाज के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, साइंस एज वेल एज अपनी पॉलिटी को चेंज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट मॉडर्न इंडिया। लाइक टुडे यू सी योर कॉन्स्टिट्यूशन,
The constitution is a legacy of these political reforms. Yes or not? 60% of provision कौन से एक्ट से आते हैं? एक्ट ऑफ 1935. अब वो क्या है? It's an outcome of the British rule. You see your society, in a society what is value? जिसको इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है वो वैल्यू होता है, जिसको रट्टा मारना आता है उसको सीबीएसई वैल्यू करती है, ठीक है ना? तो व्हाट इज वैल्यूड इन आवर सोसाइटी? एवरीथिंग जो सोसाइटी में वैल्यू, तो कौन छोड़ के गए हैं? ब्रिटिश. वही आइडियाज चलते जा रहे हैं. इकोनॉमी, इफ यू सी इवन टिल टुडे, इंडस्ट्रीज आर रिलेटिवली ऑन द लेसर साइड. एग्रीकल्चर आज भी हमारा एक बहुत ही बड़ा पार्ट है हमारी इकोनॉमी का. बहुत अराउंड 50% आपकी वर्कफोर्स, 45 से 50% आज भी किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर. While we see with respect to religion, yes, lots of forward changes have happened over a period of time, और वो काफी अच्छा हो चुका है. Finally, if we see with respect to science, yes, we have seen certain tremendous developments, but still we are lacking if we compare ourselves to other independent countries. ठीक है, वो है. But at least it was the beginning of the chapter of modern India. तो चलिए पूरी स्टोरी को स्टार्टिंग से समझेंगे. आई होप ये वर्ड समझ में आ गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्न? अब स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से, ठीक है? नाउ टेल मी वन थिंग, हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु केम टू इंडिया? द फर्स्ट पर्सन वाज वास्को डे गामा. सारी कहानी सबको पता है. वास्को डे गामा केम टू इंडिया. फ्रॉम वेयर डिड ही केम? है ना, ही केम फ्रॉम पोर्चुगीज, राइट? देखिए अब ये है आपका पोर्चुगल, ठीक है? लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पोर्चुगल. सो फ्रॉम हियर ही केम ऑल द वे अप टू द केप ऑफ गुड होप, एंड फ्रॉम हियर ही केम टुवर्ड्स इंडिया. इनफैक्ट उनको रास्ता नहीं पता था. देयर वाज अ गुजराती पर्सन, है ना? हाँ हाँ, उन्होंने उनको रास्ता बताया और वो इंडिया तक लेके आ गए. दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अ यूरोपियन पर्सन केम टू इंडिया डायरेक्टली. प्रीवियसली ट्रेड यूज्ड टू हैपन, बट दिस ट्रेड यूज्ड टू हैपन थ्रू हियर, ठीक है? देयर वाज अ डिफरेंट रूट थ्रू व्हिच ट्रेड यूज्ड टू हैपन. इट वाज नॉट लाइक द अदर्स. दिस वाज द एरिया फ्रॉम वेयर द ट्रेड यूज्ड टू हैपन, है ना? इसी को हम सिल्क रूट बोलते हैं, ठीक है? दिस इज द एरिया विच इज नोन एज द सिल्क रूट. बट what changed in Europe is that this area of Constantinople, there was an empire which was rising. Its name was Ottoman Empire. This Ottoman Empire was rising, and in 1453 they captured a place known as Constantinople. ठीक है? Which is nothing but today's Istanbul. तो इस्तानबुल ही उसी का पूरा नाम क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल है. They captured this. Constantinople was very, very important for trade. Since it now came under the control of the Ottoman Empire, it started putting n number of taxes. So this land trade became unprofitable for the Europeans. Now they wanted कि भाई किसी तरीके से एक डायरेक्ट रास्ता निकाला जाए. There should be a method through which they could bypass this Ottoman Empire and directly come to India. यहाँ से स्टोरी शुरू होती है. That in the 15th century we see the rise of this Ottoman Empire. This Ottoman Empire captures a strategic place by the name of Constantinople, which is now controlling the trade of the Europeans with Asia. अब उन सारे के सारे लोगों को एक ही चीज समझ में आई, that if we want to pursue trade, now we need a different pathway, and for that they are going to come towards this. ठीक है? जो पहले वाला रास्ता था, this was the first one, but now they realized that they can come from here and all the way up to this was now seen. but ये करने के लिए पूरा का पूरा किसको जाना था? अफ्रीका. वास्को डी गामा से पहले भी एक इंसान थे जो आने की कोशिश कर रहे थे. His name is Bartholomew Dias. ठीक है? His name is Bartholomew Dias. So he came to the Cape of Good Hope in 1487. वहां तक पहुंचे, लेकिन वहां से उसके बाद फिर लगा पता नहीं कहाँ जा रहे, तो वापस पोर्चुगल निकल गए. तो अफ्रीका तक, साउथ अफ्रीका तक आए थे, बट वहां से वापस चले गए. अराउंड 1487. This is the event of 1487. But finally, the one person who became successful, all of us know his name, is Vasco de Gama. So Vasco de Gama became successful, and it came in 1498. In 1498, he came to. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, why did Europeans come to India? आए क्यों?
उसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर है, दैट इज द राइज ऑफ Ottoman Empire. And Ottoman Empire captured the area which was very important for trade, and that was Constantinople. इस वजह से प्राइमरी मोटिवेशन बनी. अदर देन दिस ऑल्सो देयर वर सर्टेन फैक्टर विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. देखिए, इतना बड़ा रास्ते आने के लिए आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ डेवलपमेंट्स होनी चाहिए. अभी हम लोगों को घर भी जाना हो तो हम बिना गूगल मैप नहीं जा पाते. तो अगर हम उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे उनको कुछ चीज चाहिए थी. व्हाट वाज दैट? एंड दैट वाज मैप्स. कार्टोग्राफी की स्किल चाहिए थी. शिप्स चाहिए थी विच कुड सस्टेन फॉर सच लॉन्ग डिस्टेंसेस. वास्को डी गामा वाज नॉट द ओनली पर्सन who was trying to go for discovery. There are so many people who were trying to discover the world. और ये पूरा का पूरा जो एक जोश आया था यूरोपियन लोगों के अंदर, किसकी वजह से आया था? बिकॉज ऑफ रेनेसां. रेनेसां मीन्स रीबर्थ, where they were trying to refine the culture. They were trying to understand what other peoples are doing in their lives. इस तरीके से आपको पता है कि the one person who went towards America was Columbus. Columbus आना तो हमारे पास रहे थे, है ना? He wanted to find India, he wanted to discover India, but that did not happen. He went towards America. There were so many people like this. Like there was a person by the name of Cabral. He went towards Brazil. So many people went to different parts of the world. इनफैक्ट एक ट्रीटी है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास. ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास. एज पर दिस ट्रीटी उन्होंने एक पूरा का पूरा डिमार्केशन कर दिया कि इस लाइन के वेस्ट कौन जाएगा? स्पेन. एंड टू द ईस्ट ऑफ दिस लाइन इज गोइंग टू गो फॉर पोर्चुगल, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास. ठीक है, पहले खुद ही डिवाइड कर लिया कि भाई हम दो लोग हैं, ये रास्ता तुम्हारा है ना, जैसे घर में बंटवारा होता है, ये तुम्हारा और ये मेरा. लाइक दिस इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास. ठीक है, थोड़ा सा नाम अलग सा है. ठीक है, दिस इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास. दिस वाज साइंड बिटवीन स्पेन एंड पोर्चुगल. भाई द वेस्टर्न पार्ट इज नाउ गोइंग टू गो टू स्पेन. इसलिए आप देखते हैं साउथ अमेरिका, अमेरिका में किसने डोमिनेट किया? स्पेन. एंड टुवर्ड्स द ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, हु केम टुवर्ड्स दिस एरिया? पोर्चुगीज इनिशियली. दिस इज व्हाट इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास. इसके साथ में कुछ साइंटिफिक फैक्टर्स भी हैं जो आप सब लोगों को पता होने चाहिए. ठीक है, स्टेट का सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट था. देयर वाज अ किंग बाय द नेम ऑफ प्रिंस हेनरी. तो ही वाज फ्रॉम पोर्चुगल. उनको टाइटल भी दिया गया था द नेविगेटर. तो नाम काम ही एक ही था कि भाई आई हैव टू फाइंड द वर्ल्ड. So he was the one who wanted to find a complete pathway to India. In fact, there was a war between religions also. Islam was spreading very quickly. These kings, they want to spread Christianity. That's why also they now wanted to go to the new lands. Because जो भी area बचा हुआ है जहाँ पे अभी तक लोगों के पास religion नहीं है, that area will find large number of conversions. That's why they were also looking for that. So that's why this Prince Henry was also given a bull by Pope. Pope, now he was the religious head of the Christians, Catholic. तो उन्होंने उसको एक बुल भी दिया कि भाई जाओ अलग अलग जगह पे जाके अपना झंडा आगे लेके जाओ. ठीक है, लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज डन इन एक्सप्लोरेशन. जितने भी यहाँ के लोग थे, तो ये सारी चीजों ने मिलजुल के क्या क्रिएट किया? दे क्रिएटेड द सर्कमस्टांसेस फॉर द एंट्री ऑफ यूरोपियंस टुवर्ड्स इंडिया. हम सारे अगर समराइज करें, पॉलिटिकल में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? हम बात कर सकते हैं द विक्ट्री ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. ठीक है, एंड द एजेंडा ऑफ प्रिंस हेनरी. इकोनॉमिक में अगर हम बात करें तो भाई देयर ट्रेड वाज सफरिंग बिकॉज ऑटोमन एम्पायर हैज कैप्चर्ड द रीजन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. नाउ दे वांटेड डायरेक्ट ट्रेड विद इंडिया. और इंडियन गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी. सबसे इंपॉर्टेंट है स्पाइसेस. व्हाई स्पाइसेस वर सो इंपॉर्टेंट? व्हाई स्पाइसेस वर सो इंपॉर्टेंट? Yes, so multiple factors. Preservative, yes, as a preservative we use them, but not just as preservative. और भी बहुत सारे काम हैं. Yes, for digestive system they are also used as a medicine also. है ना? तो बहुत सारा टेस्ट तो चलो ठीक है ना? चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, टेस्ट अलग चीज होगी, लेकिन in a way these were the major things. So that's why the Indian masala, spices, they were in very high demand. यूरोप में क्या हो रहा था? पर पर्सन जो एक तरीके से हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं आज, ठीक है ना, तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही थी. व्हाई वाज डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजिंग इन दैट एरिया? बिकॉज एग्रीकल्चर वाज नाउ इंक्रीजिंग इन दोज एरियाज. दैट्स व्हाई उन लोगों के पास अब डिमांड ज्यादा थी. जिसके पास पैसा ज्यादा होगा उसके पास क्या होगी? डिमांड.
एंड जब वास्को डी गामा इंडिया आए और जब वापस गए, कितने टाइम्स प्रॉफिट बनाया उन्होंने? 60 टाइम्स प्रॉफिट बना के निकले। 60 टाइम्स। 60 टाइम कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं होता। एक नॉर्मल से बिजनेस में कितना परसेंट प्रॉफिट होता है? 10-15%, 15%। ये भाई साहब भाई 60 टाइम्स प्रॉफिट बना के ले गए। इट मीन्स यहाँ से कोई 1 रुपए की चीज खरीदे हुआ कितने रुपए में बेची? 60 रुपए के आसपास। 60 टाइम्स। 1 रुपए की अगर यहाँ से लगेगी तो वहां पे 60 रुपीज में उसको सेल मार दी। 60 टाइम्स प्रॉफिट निकाल के मोटा मोटा। तो ये चीज समझिए, यही सारे फैक्टर्स थे व्हाई डिड वी सी द एंट्री ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। और सबसे पहले कौन है हमारे पास? द फर्स्ट वन टू एंटर। तो ये बस एक चार्ट याद कर लीजिएगा, ये आपकी सहूलियत के लिए बनाया गया है। कैन वी सी द फर्स्ट वन? द फर्स्ट वन वाज Portuguese with Vasco da Gama. That's very easy. Second to enter, they were Dutch. Dutch were the second one to enter, and that is in 1605. Then we see the entry of the most important for us, who will rule us for large number of years, in fact 2 broad centuries. The British in 1608 they created their factory at Surat. Then we see the Danes, Danish people, and the last one to arrive they were the French. And they formed their factory in 1668 again at Surat. The British and the French, they formed the first factory at the same place. Okay, so these are the 5 Europeans who came to India. प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शनल में क्या है कि हम समझेंगे, बट ऑप्शनल में इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं आते कि सारे यूरोपियन पावर्स जो आए उनके नाम। ऐसा होने लग गया तो फिर तो ये सबसे आसान पेपर बन जाएगा, है ना। इससे आसान कुछ होगा ही नहीं। क्वेश्चन क्या आता है? एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। उस टाइप के क्वेश्चंस आने की चांसेस है। जब हम स्टार्ट करेंगे अभी अपनी आगे क्लासेस मंडे से, तो पूरा का पूरा जो हमारा ध्यान है इट इज गोइंग टू बी विद रिस्पेक्ट टू दी आंसर राइटिंग। तो प्लीज ये अभी के लिए बस ब्रॉडली याद रखना, 4 जो इंपॉर्टेंट पावर्स हैं दे वर पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश एंड द लास्ट फ्रेंच। डेनिश आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू शुड नो द टाइम, because they did not have any major contribution in India. They largely invested their time in the religious activities. उन्हीं में उनका सबसे ज़्यादा टाइम चलता रहा। बाकी जितनी भी पावर्स थी, they played an important role in the political system as well in the economic system. दोनों के अंदर उनका अच्छा खासा contribution रहा। तो चलिए आगे एक बार बात कर लेते हैं, पोर्चुगीज से स्टार्ट करते हैं। The first person is Vasco da Gama. The first person is Vasco da Gama himself. Okay. So we have already seen the route which was taken by him. When he came to India, he landed at the port of Calicut. और कौन से मंथ में आए थे? May. ठीक है? He came on May 21, 1498. The ruler of this region, they used to take the title of Zamorin. So they were the Hindu rulers who used to take this title. More importantly, as we have just discussed, कितने times profit करके गए? 60 times. अब आप सोचिए ना, एक बार 60 टाइम प्रॉफिट होगा तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? सबको पता चल गया यूरोप में कि कितना प्रॉफिट है विद ट्रेड विद इंडिया। दैट क्रिएटेड द रेस फॉर कमिंग टू इंडिया। दैट क्रिएटेड द रेस, राइट। दोबारा फिर से आए इन 1502। एट दैट टाइम व्हेन दे केम टू इंडिया, द फॉरेन ट्रेड वाज इन द हैंड ऑफ अरब्स। अरब्स यूज्ड टू प्ले अ मेजर रोल इन द ट्रेड एंड कॉमर्स। बट अगर उनको इसमें अपना सिक्का जमाना था, इफ दे वांटेड टू नाउ कैप्चर द ट्रेड ऑफ इंडियन ओशन, they were now required to oust which community? Arabs. So the rivalry started with the Arabs after this itself. तो पूरा का पूरा rivalry उनके साथ start हो गया। In fact, he also tried to play one ruler of Cochin against the Calicut, because he realized that if I can play the policy of divide and rule, फायदा किसका होगा? Portuguese का फायदा होगा। Before he would go out of India, he established a factory which in other ways it was more of a warehouse, सामान रखने के लिए, import and export in Cochin, and a prison at Kannur. Prison कहाँ पे open करके गए? Kannur. Why prison? From the beginning these people realized one thing, that अगर हम armed trade नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होने वाला। पोर्चुगीज इंडिया में हमेशा माइनॉरिटी में रहने वाले थे, and if you want to capture a territory, okay, where you are in minority, you need the help of guns, you need the help of fear. तो बिना किसी को डराए धमकाए क्या आप अपना शासन रख सकते हैं? पॉसिबल नहीं। तो here one thing which they believed in is set up more and more prison, and whoever is not going to accept us, उसको हम कहाँ डालेंगे? सीधा जेल में डालेंगे। That's how the British
also later on learned from them, and eventually with the period of time this continued. Next, there are 2-3 systems which were used by them. आपको उनके बारे में थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ. The one system which was used by the Portuguese in India, this system is known as Carta system. मतलब अगर आपको ट्रेड करनी है तो you would require a license. You would require a license. इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कार्टास. जैसे आज को अगर आपको इंडिया से कुछ भी इंपोर्ट, बाहर से इंपोर्ट करना है, यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो किसके अप्रूवल लगते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल लगते हैं. They started capturing the trade and they came out with this system known as Carta's system. This Carta system was very influential. Why? Because with the period of time, the traders now they were required to take license, and this increased the revenue of whom? The revenue of Portuguese. इसको हम बोलते हैं Carta's system. और मान लीजिए अगर किसी ने नहीं लिया लाइसेंस, what would happen then? क्या किया जाएगा उसके साथ में? If somebody would not take the license, then the ship was taken. ठीक है, शिप ले लेते थे, गुड्स वर सीज्ड, एंड और अगर मन किया तो जो उसके लोग हैं उनको किस में बेच देते थे? एज अ स्लेव. तो पूरा डर बना दिया. नंबर 1, योर शिप विल बी टेकन. नंबर 2, योर गुड्स विल बी सीज्ड. एंड उससे भी उन्हें लगा कि जस्टिस नहीं हुई है, बच गया कुछ, तो यू विल ऑल्सो बी सोल्ड इनटू स्लेवरी. So this is how the Carta system became a very draconian system. Indian traders started hating it. कि भाई आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो इंडिया से. But this is how they started their system. The second system which was used by these people is known as Kafila system. Kafila system means, like, just for the sake of understanding, there used to be a formation, like at the front and at the back, there used to be Portuguese Navy. In between, there used to be ships of the merchants. So whoever has purchased the Carta, जिसने भी लाइसेंस ले लिया उसको क्या करेंगे? कम से कम प्रोटेक्शन तो देंगे, ठीक है? They want to give them protection. So this system is known as काफिला system. इसके दो फायदे थे. For the merchants, they were saved from piracy. आप सबको पता है कि अफ्रीकन कोस्ट के पास में कौन सी कंट्री आती है? सोमालिया, है ना? सोमालिया. और सारे के सारे पायरेट्स वहां से, नेचुरल पायरेसी वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है? So piracy is one area which was very problematic for these people. That's why the Portuguese thought, to show our strength, we have to also show this kafila system. हमें एक system create करना पड़ेगा. So this system was created by the Portuguese, where they used to provide a kind of protection to the merchants, and for that protection, they used to take a certain amount of revenue from the certain amount of fee from the merchants. ये दो सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है पोर्चुगीज के. हो सकता है नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ठीक है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टास सिस्टम? तो पता होना चाहिए. कार्टा सिस्टम नथिंग बट इट्स अ लाइसेंस सिस्टम. और कौन लेके आए थे? पोर्चुगीज लेके आए थे. देखो, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट होती टेक्नोलॉजी. The ships which the Portuguese came with, those ships were more modern in nature. The guns which these people came out, but they were modern. तो नेवी उनकी मॉडर्न थी और उनके पास शिप्स भी अच्छी थी. These two are the most important things which are required in the seas. In general, अगर आप एक मर्चेंट हैं, if you purchase a license, तो आप इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं. उनका मेजर एम ये था कि ट्रेड सारी हमारे हाथ में होनी. They wanted to become the policeman of Indian Ocean. समझो एक मतलब मोटा मोटा क्या बनना चाह रहे थे? पुलिसमैन ऑफ इंडियन ओशन. ये पूरा इंडियन ओशन हमारा है, हम जो कहेंगे वो होना चाहिए, बाकी सब देखा जाएगा. बट तब तक दबदबा किसका था? अब अगर आप देखोगे अपने बिल्कुल वेस्ट में कौन सा अपना सी है? अरेबियन सी. दिस अरेबियन सी, अरेबियन किसके ऊपर है? अरब्स. दे वर द वन हु वर कंट्रोलिंग दिस होल एरिया. तो उनको अगर हटाना था तो इनको नाउ दे रिक्वायर्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. तो सारे के सारे जो नई शिप्स आए, नई तरीके के प्रोटोकॉल्स आए, प्रिजन्स बनाई इन्होंने. किसके लिए बनाई? इन्हीं लोगों के लिए बनाई ना, कि जो भी यहाँ पे ट्रेडर्स जो हुए उनको सीधा जेल में डाल. These were the things. So it was not like they were pursuing some honest kind of trade practices. ऐसा कुछ भी नहीं था.
पूरा का पूरा इन्होंने हर तरीके का इन्होंने चीजें को यूज किया। देखो पोर्चुगीज 1498 में आ गए, ठीक है। जो मुगल एम्पायर है कब बनेगा, 1526, तो लगभग 25 साल पहले तो पहले ही आ गए। तो नंबर वन एक वो चीज याद रखनी। नंबर टू, मुगल्स का जो इनिशियल फेज था वो बहुत अनस्टेबल था। सबसे पहले कौन आया हमारे यहाँ, बाबर। बाबर ही फॉट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। 1526 से लेके 1556 तक 30 इयर्स कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूल नहीं था मुगल्स का। पहले 4 साल 4 लड़ाई लड़ी बाबर, देन ही डाइड। देन केम हुमायूं, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, हमने पढ़ा भी था उनके बारे में। नाम हुमायूं है, हुमायूं मीन्स फॉर्चुनेट, और अपना ही अंपायर चला गया हाथ से, ठीक है ना। उल्टा था उनके लाइफ का सब कुछ। तो टिल 1556 फर्स्ट 30 इयर्स इट वाज नॉट ए स्टेबल अंपायर। अकबर के आने के बाद ही स्टेबिलिटी बढ़ी थी। आप सोचिए ना, पूरे 50-60 साल किसको बन गए थे, पोर्चुगीज को। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन्होंने कौन से एरिया में आके सबसे पहले इंटरवेंशन स्टार्ट की, डेक्कन में, नॉट इन द नॉर्थ। मतलब डेक्कन तक आने में बहुत टाइम लगेगा मुगल्स को। लाइक जो डेक्कन पॉलिसी है मुगल्स की, वो किससे स्टार्ट होती है, अकबर से स्टार्ट होती है वो ब्रॉडली फर्स्ट जो डेकेड है 17th सेंचुरी, मतलब 1600s के उसके आसपास ही वो वहां तक पहुंचेंगे। मतलब टिल दी जब उनकी डेथ होगी अराउंड 1605, तब उनके पास डेक्कन का छोटा मोटा एरिया। दैट्स व्हाई बिफोर दैट द पोर्चुगीज वर ऑलरेडी एबल टू कैप्चर सम ऑफ द टेरिटरीज। द पोर्चुगीज लार्जली उनके पास यही टाइम पीरियड है। द पोर्चुगीज दे आर मोर इन्फ्लुएंशियल फ्रॉम 1498 टिल 1602। जैसे ही डच का अराइवल होता है, देयर पावर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, और इसी फेज तक ही डेक्कन तक पहुंचेंगे मुगल्स, ब्रॉडली इसी फेज तक। तो बस यही चीज दिमाग में याद रखें, दैट रफली जो इनका दबदबा है, इट इज फॉर अ सेंचुरी, अराउंड 100 years, एंड इन दोज 100 years दे विल परस्यू काटा सिस्टम, काफले सिस्टम, और लास्ट क्या है, ब्लू वाटर नेवी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर नेवी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस, अ नेवी विच कैन फाइट इन हाई सीज, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू वाटर नेवी, नेवी विच कैन फाइट इन द हाई वाटर्स। ये नहीं कि आपके कोस्ट के आसपास ही लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि दूर दूर तक जाके लड़ाई लड़ सके, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू वाटर नेवी। बिकॉज दे वर कमिंग फ्रॉम यूरोप and they're to fight everywhere across the Indian Ocean. So they need a navy which can fight anywhere and which can guarantee a victory. ये सारी की सारी जो पॉलिसीज हैं किसने परस्यू करी, पोर्चुगीज ने। और पोर्चुगीज का देखो बहुत सारा इम्पैक्ट है इंडिया पे आज भी। पॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट है पोर्चुगीज के आने का, सबसे पहले कमर्शियल ट्रीटीज साइन की गई इंडिया के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम विद रूलर्स, कमर्शियल ट्रीटीज, ठीक है। नंबर टू, अगर हम इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट देखें तो इकोनॉमी में दीज पीपल केम आउट विद सम न्यू काइंड्स ऑफ क्रॉप्स जो इंडिया के अंदर पहले नहीं थी कभी भी। और यही क्वेश्चन 3 से 4 बार यूपीएससी हर साल एक तो ये पूछ ही लेता है, पता नहीं क्या खा ना, वहां पे चेयरमैन बैठ के खाते हैं मेरे घर से, पपाया खाते हैं, पाइनएप्पल खाते हैं, और वही पेपर में पूछ लेते हैं कि भाई ये कहाँ से है, ये कहाँ से आया। तो दोज क्रॉप्स, वो वर्ड भी आप हमेशा याद रखिए, दैट अमेरिका इज नोन एज न्यू वर्ल्ड। Why? Because it was discovered in the 15th century, while the rest, like Asia, Europe, Africa, all of this, which was known to humanity since ages, that is known as Old World. A large number of crops were brought from this New World and they were taken to the Old World. हमारे यहाँ काफी सारी नई नई क्रॉप्स को लेके आए, जैसे कि टोबैको, टोमेटो, पोटैटो, ये सबका सब कहाँ से आया है, अमेरिका से। तो पोटैटो है, पोटैटो कहाँ की नेटिव क्रॉप है, अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज हैं। पेरू, पेरू की है ये नेटिव क्रॉप। तो बहुत सारे जो भी उनको वहां मिला वहां लेके आ गए, टोबैको लेके आ गए। पूरा इंडिया आज क्या कर रहा है ना, तो टोबैको जो है, बीड़ी और सब कुछ चले, पूरी इंडस्ट्री जो आईटीसी पूरी कंपनी, दैट्स अ लेगेसी ऑफ पोर्चुगीज। यस, ब्राजील, ब्राजील का जो एरिया था वो किसके अंडर था, पोर्चुगीज के अंडर था। एंड
वो बनाने के लिए आपको वो जरूरत नहीं थी उस टाइम पे, इस लेवल की सॉवरेंटी नहीं थी कि आप बाकी एरियाज में नहीं जा सकते। तो फ्रॉम द स्पेनिश ऑल्सो दे गॉट सम क्रॉप्स एंड दे ब्रॉट इट टू, उनको ये था ना कि भाई वी विल ग्रो देम ऑल्सो, और उसको भी फिर सेल करेंगे। दे वर हैविंग द कमर्शियल मोटिव्स। टोबैको तो इतना चला आज की डेट में, आप देख लो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है द होल टोबैको अक्रॉस द वर्ल्ड। क्लाइमेट लेकिन इंडिया में बहुत बड़ा है ना, आप देखो ना इंडिया कितना बड़ा है, हर चीज के लिए क्लाइमेट चाहिए, दैट इज ट्रू। बट इफ वी हैव एज डाइवर्स कंट्री एज इंडिया, तो आप कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। डिपेंड करता है ना आपको कहाँ जाना है। आपको अगर बहुत ही कोल्ड रीजन चाहिए, जैसे वीट है, वीट को थोड़ा सा विंटर वाला एटमॉस्फेयर चाहिए, तो मिल जाता है आपको। पंजाब हरियाणा पूरी नॉर्थ की जो बेल्ट है पता चल जाती है आपको, ठीक है। वहीं अगर मान लीजिए आपको ग्रो करना है कॉटन, कॉटन के लिए आपको ब्लैक सॉइल चाहिए, है ना, जो मॉइस्चर को रिटेन कर सके, आपको डेक्कन में मिल जाती है। तो जब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप सॉइल टाइप्स हैं इंडिया के अंदर, हर सॉइल टाइप में कुछ ना कुछ ग्रो हो सकता है। मैंगोज देख लीजिए, मैंगो किसने इंट्रोड्यूस किया, ग्राफ्टिंग स्पेसिफिकली इन्होंने लाके किया। वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो पोर्चुगीज ने हमारे लिए करी, है ना। मैंगो ग्राफ्टिंग की नई टेक्निक लेके आए थे जिससे नए टाइप के मैंगोज इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए ना। इनके एक गवर्नर भी थे अल्फोंसो, और वही हमारे यहाँ अल्फोंसो मैंगो सेम है, वैरायटी वहीं से आती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पोर्चुगीज लेके आते। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है ठीक ठाक, सोशल इम्पैक्ट यस दैट इज ऑल्सो देयर। वी सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया, ठीक है, इन लार्ज नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम, विच वर हैविंग द बैकिंग ऑफ पोर्चुगीज। नई टाइप की शिप्स भी हमारे यहाँ लाई। तो ऐसा एक ब्रॉड इम्पैक्ट रहा पोर्चुगीज का। तो ये बस आप थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में याद रखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। और बहुत सारी कॉलोनीज इन्होंने स्टैब्लिश की, अगर आप देखोगे तो ये तो सबको पता ही है। गोवा के बारे में आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, इट वाज अ टेरिटरी, यस वी हैड दमन एज वेल एज दीव, बट अदर देन दिस आल्सो वी हैड लाइक सूरत वाज अ प्रोमिनेंट, okay, similarly before that Calicut was there where they landed. Even towards the east they had a small territory at Pulicat. Nagapattinam also had some of them, okay. Even Sri Lanka initially was under the control of the Portuguese, लेकिन बाद में श्रीलंका को कौन कैप्चर कर लेगा, डच, एंड फ्रॉम डच इट विल बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। इस तरीके से श्रीलंका में अपनी पॉलिटिकल पावर चेंज होती रहेगी। So these are some of the areas which are under the control of the Portuguese. Next power कौन है, डच। नेक्स्ट वर्ड डच। डच केम, डच जो कंपनी थी सबसे ज्यादा फेमस इसके बारे में ये चीज है, इट वाज द फर्स्ट एमएनसी इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये चीज याद रखना, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एमएनसी इन द वर्ल्ड। इट वाज बेस्ड अपॉन द शेयर होल्डर मॉडल, जैसे हमारी सेंसेक्स हो गया या फिर हमारा निफ्टी हो गया, इसके ऊपर कंपनी लिस्ट होती है ना, एनएससी वगैरह के ऊपर, ठीक है, एनएससी के ऊपर हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हो गया। तो व्हाट वी सी, फर्स्ट कंपनी टू इशू स्टॉक्स। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्टॉक्स, शेयर्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक कंपनी की एक वैल्यूएशन है, कि भाई अगर एक कंपनी की मान लीजिए आप 100 करोड़ वैल्यूएशन है और उन्होंने 10,000 शेयर निकाल दिए, तो आप 10 करोड़ डिवाइड बाय 10,000 कर दी, तो वो आपका एक शेयर का क्या निकल गया, प्राइस निकल गया मोटा मोटा। तो आप जितना शेयर आप खरीदेंगे उतना पैसा आपको किसको देना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा, और बाद में जब प्रॉफिट होगा तो आपको उसके साथ में क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा, है ना। तो इकोनॉमी में पढ़ा है थोड़ा थोड़ा बहुत कंसेप्ट इनके बारे में, ठीक है। तो पहली बार इन्होंने इशू किए थे स्टॉक्स। फर्स्ट फैक्ट्री दे ओपनड एट मसौलीपट्टनम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। वन एरिया विच बिकेम देयर हेडक्वार्टर इट वाज पुलिकट, और यहाँ पे जो फोर्ट उन लोगों ने बनाया उसको हम बोलते हैं फोर्ट जिलाड्रिया, ठीक है। दे वर द वन हु डिफीटेड पोर्चुगीज फ्रॉम इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड। एंड एक चीज इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया, इट वाज इंडियन टेक्सटाइल। स्लोली उनका जो इंटरेस्ट था इंडिया से ज्यादा कहाँ चला गया, साउथ ईस्ट एशिया, एंड इनफैक्ट दे वेंट एंड दे कैप्चर्ड द रीजन ऑफ जावा। तो जावा को जाके उन्होंने कैप्चर कर लिया। जावा इज टुडे पार्ट ऑफ विच कंट्री, इंडोनेशिया, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। तो उन्होंने कैप्चर कर लिया। लेटर ऑन डच लॉस्ट देयर सेटलमेंट्स, इनफैक्ट दे लॉस्ट इन दिस फेमस बैटल ऑफ चिंसुरा। ये हार गए थे ब्रिटिश से और बाद में इनका कहानी खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। बट फिर भी इनिशियली ये लोग क्यों जीते, ये पोर्चुगीज से जीते कैसे, कुछ तो नया चीज कर रहे होंगे ये। लाइक सी द नंबर वन, इट वाज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस करने का तरीका ज्यादा अच्छा, मॉडर्न कॉपरेशन थी, कभी भी डेट ले लेते थे किसी से भी, ठीक है। तो इट वाज अ मॉडर्न वे ऑफ डूइंग द ऑपरेशन, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, शिपिंग टेक्नोलॉजी। दे केम आउट विथ वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ शिप व्हिच इज नोन एज फ्लूइड शिप।
क्या बोलते हैं उसको, फ्लूइड शिप। दीज वर नैरो शिप्स विच रिक्वायर्ड लेस क्रू, कम लोगों से ही काम हो जाता था, और इनकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट भी थी बिग शिप्स। बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स डच वर एबल टू बिकम सुप्रीम एंड दे वर एबल टू डिफीट द पोर्चुगीज, उसको हरा गए। इनकी रिलीजियस पॉलिसी भी ज्यादा लिबरल थी, ठीक है। क्रिश्चियनिटी के अंदर दो मेजर एरियाज हैं, एक हमारे कैथोलिक्स है, सेकंड इज प्रोटेस्टेंट। देखिए जो कैथोलिक्स हैं, लाइक द पोर्चुगीज, दे वर कैथोलिक्स एंड दे वांट टू स्प्रेड देयर रिलीजन, while on the other hand the Protestants, okay, और डच क्या है, कौन सी कंट्री है, प्रोटेस्टेंट कंट्री है, they are not the one who believe in spreading their ideas too much, तो वो कन्वर्जन पे उतना फोकस करते नहीं। they may share their ideas but they do not focus more on conversion because the Protestant religion is not under the control of whom, pope, पोप के अंडर कौन सा आता है, कैथोलिक्स आते हैं, इसलिए दे वर मोर लिबरल देन द पोर्चुगीज। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी चीज है, दे इवन गिव जूइश फैमिली सेंचुरी इन कोची। इस वजह से पोर्चुगीज, देयर रिलीजियस पॉलिसी अफेक्टेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स, बट द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ दिस डच पीपल डिड नॉट अफेक्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे वर रिलेटिवली मोर कंफर्टेबल विद देम। दे हैड रिसोर्सेज फ्रॉम अफ्रीका, वहां से गोल्ड लेके आते थे, they were always having money for financing their trade, and most importantly later on they started focusing on Southeast Asian trade. So the first area इन्होंने लिया था अपना पोर्चुगीज से, that was the region of Java. इन सारे फैक्टर्स की वजह से डच जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गए। बाय द अर्ली 17th century they replaced the Portuguese in majority of the area. श्रीलंका भी उनसे ले लिया, साउथ ईस्ट एशिया भी उनसे ले लिया, इवन इन इंडिया they also established large number of settlements. बट डच के साथ एक ही दिक्कत थी, Dutch were militarily less prominent. They got defeated by one of the ruler of India, Martand Varma. Okay, they got defeated by even the British. So militarily they were not very strong. ठीक है ना, तो जो later 18th century के अंदर they will not be able to cope up with the kind of fight, with the kind of strategies which are required to continue. बट इंडिया में आके इन्होंने तीन चार चीजें फेमस की। नंबर वन, टेरिटोरियल एम्बिशंस, नए नेटवर्क बनाए इन्होंने, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट की, ब्रोकर्स का यूज किया फॉर मल्टीपल थिंग्स। इनफैक्ट द डच दे वर इन्वॉल्व्ड इन स्लेव ट्रेड, तो जो पूरा का पूरा तमिलनाडु का एरिया है वहां से ये लोग स्लेव्स को लेके जाते थे मल्टीपल प्लेसेस, इवन टुवर्ड्स मलेशिया, इवन टुवर्ड्स द वेस्ट इंडीज, हर जगह ये लोगों को लेके गए। लाइक वी फाइंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वेस्ट इंडीज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, ठीक है। सो दीज आर द कंपनीज व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दैट, दे टुक देम टू दीज डिस्टेंस प्लेसेस। बाद में इनका डिक्लाइन होता है, एज आई टोल्ड यू, दो तीन मेजर रीजंस हैं। एक तो जो इनका व्यापार था, ठीक है, दैट डिडंट वर्क आउट, लेटर ऑन इट बिकम अनप्रॉफिटेबल। सेकंड, दे लॉस्ट इन द बैटल ऑफ कोलाचन, दिस दे लॉस्ट टू मर्तांड वर्मा, एंड फाइनली दे आल्सो लॉस्ट टू द ब्रिटिश। So because of all these factors we see their decline. ब्रिटिश के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा सा डेनिश के बारे में बात कर लेते हैं। Now when we talk about Danish, this company was established in 1616, ठीक है। They found their first factory in Trankebar. Trankebar is a place in Tamil Nadu. It is near Tanjore. But इनका जो largely काम था वो सिर्फ एक ही था, they were spreading Christianity in India. They were not having फ्लीट मर्चेंट, उनके पास कुछ भी इतनी बड़ी फ्लीट नहीं थी, शिप्स नहीं थी, so that they could participate in the trade and commerce. So they largely focus on one thing, and that one thing, as we can understand, that is focus only on spreading the Christianity. And there was a person by the name of Bartholomew Ziegenbalg. Okay, so he was the one who was responsible for arriving in Trankebar, and then first person who started spreading Christianity in a significant manner. Even though the Danish, they were Protestant, but still they persisted with these policies of spreading Christianity. And एक बहुत ही अच्छा फैक्ट याद कर लीजिएगा, he was the first person who translated the Bible, the New Testament, into Tamil. So Tamil is the first language in which the Bible was translated. ठीक है, it was translated. That's what you need to remember. The facts हैं कुछ, कभी कभार प्रीलिम्स में आ जाते हैं। French was formed in 1664, ठीक है, और फ्रेंच के साथ एक डिस्टिंक्शन थी, फ्रेंच कंपनी वाज फॉर्म्ड बाय द स्टेट। बाकी सारी जितनी भी कंपनीज है लार्जली वो किसके अंडर थी, प्राइवेट इनिशिएटिव्स थे, बट ये बनाई थी स्टेट ने खुद। इनफैक्ट द फर्स्ट फ्रेंच सेटलमेंट वाज एट सूरत इन 1668, देन दे ओपनड अ नेक्स्ट फैक्ट्री एट मसौलीपट्टनम, ठीक है, एंड जो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है दैट इज पौंडीचेरी। सो पौंडीचेरी वाज फॉर्म्ड इन 1673, एंड इसके बाद यही इनका बेस रहेगा
till they're going to be defeated by whom? British in the Carnatic wars. तो वो चलता रहेगा लंबा इनका, ठीक है. And 1688 they established Chandranagar also, because Chandranagar is the place in which state? Bengal. This is in the Bengal region. ठीक है. तो देखिए थोड़ा सा आगे बात करेंगे इनके बारे में. ब्रिटिश. ना ब्रिटिश 4-5 फैक्ट्स तो कम से कम याद रखने हैं एग्जाम के लिए. नंबर 1, this company was formed in 1599 and it used to call itself the English Association of the Merchant Adventurers. ये इनका नाम हुआ करता. Then it got a charter also. The charter was given by the Queen and Queen Elizabeth in 1600, and thereafter we see the beginning of the work of this East India Company. First factory इन्होंने फिर से वही सेम जगह जैसे कि फ्रेंच का भी सेम ही है सूरत में ओपन की. Then they opened at Agra, Ahmedabad as well as Bharuch. South India में the first factory was at Masolipatnam, and with the period of time they even got Madras. Okay, by 1639 they got Madras on lease from the local Nayak, okay, who was a you can say successor of the Vijayanagar Empire. ईस्ट में इन्होंने ओपन की उड़ीसा के अंदर हरिहरपुर as well as बालासोर. By 1690 they were also able to get a place by the name of सुतनती, ठीक है, जिसको उन्होंने क्या किया? फोर्टिफाई कर लिया, उसको उन्होंने अपना एक सेटलमेंट कर लिया. Within next decade, okay, by 1698 they got the जमींदारी of सुतनती, कालीकता एंड गोविंदपुर. तो कालीकता जो एक गांव था, ठीक है, मर्ज किया सबको और वो क्या बन गया? कैलकटा. ठीक है, वो कैलकटा बन गया. अब कोलकाता बाद में नाम चेंज हुआ, बट इट बिकेम कैलकटा. सो कैलकटा जो है अगर आप सही से देखेंगे तो 3 एरिया, सुतनती, कालीकटा एंड गोविंदपुर. इन तीनों को अगर मिक्स कर देते हैं, ठीक है, देन वी हैव these 3 mixed, और वहां पे दे विल एस्टैब्लिश देयर फोर्ट बाय द नेम ऑफ फोर्ट विलियम. ठीक है, इतना बस याद कर लीजिए. दीज आर सम बेसिक फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपनी. देन दे यूज्ड टू बी 24 डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. दे यूज्ड टू सिट एंड दे यूज्ड टू डिसाइड ऑल द पॉलिसीज ऑफ दिस कंपनी. ठीक है, the British had this naval superiority which eventually become very influential, a very disciplined army, and they will use the debt market, पैसे की जो मार्केट है उसको अच्छे से यूज करेंगे, and all these factors will become responsible for the victory of British. ठीक है, तो देखिए अगर हम मैप देखें इंडिया का, in different parts of India we see different settlements. पोर्चुगीज का अगर सेटलमेंट देखोगे तो कौन कौन सा सेटलमेंट निकल के आएगा? लाइक वी हैव दमन, दीव इज देयर, गोवा इज देयर, ओके, कैलिकट इज देयर, कोचीन इज देयर. ये किसके हैं? पोर्चुगीज के हैं. ठीक है, ब्रिटिश के अगर देखोगे तो वील हैव एट सूरत, इंपॉर्टेंट वन. सिमिलरली एट पटना आल्सो, एट हुगली आल्सो. दिस इज इंपॉर्टेंट ऑफ द इंग्लिश. इवन एट चेन्नई. इफ यू गो फॉर फ्रेंच, the French can be found at Balasore. The French can be found even at, more importantly, Pondicherry. At Pondicherry also we find them. Okay. Dutch, we found them at Nagapattinam. Dutch are also found at a place known as Pulicat. I hope Pulicat Lake के बारे में पता है, ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसके बारे में. Pulicat Lake, तो वहीं पे उनकी सेटलमेंट थी पहले. तो ये सारी की सारी सेटलमेंट्स थी in different parts of India, and these settlements they continued, right? बॉम्बे जो था, जो आइलैंड था, बॉम्बे पहले किसके पास था? पोर्चुगीज के पास था. पोर्चुगीज से डावरी में किसको मिला था? इंग्लिश किंग को मिला था. और किंग ने 10 पाउंड के रेंटल के लिए किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया. तो इस तरीके से उनके पास आया था. ठीक है, तो बोलते भी हैं कि भाई इफेक्टिवली इंडिया में सबसे बड़ा अगर डॉरी का कोई एग्जाम्पल है तो वो बॉम्बे है ना. सिस्टम ऑफ डॉरी जो है सबसे बड़ा आज तक किसी ने अगर दिया है, दहेज, है ना, तो वो पोर्चुगीज ने दिया है. पूरे के पूरी सिटी दे दी है दहेज में, ले लो. दैट्स हाउ इट हैज स्टार्टेड. एनीवे, देखिए जो इनिशियल पार्ट है जो हमने पढ़ा, इट इज मोर अबाउट स्टोरी. कौन आया, कैसे आया, किस तरीके से आया. हमारे ऑप्शनल में इन सब के ज्यादा महत्व है. ये जीएस में चलो फिर भी थोड़ा वो ठीक है कि वो यूपीएससी हर बार पूछ लेता कौन सी क्रॉप पोर्चुगीज लेके आए थे, बट ऑप्शनल में ये सब ज्यादा काम का आता नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंड. बट यहां से जब हम स्टार्ट करते हैं आपका ऑप्शनल इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होते हैं. तो इसी को बोलते हैं ब्रिटिश कंसोलिडेशन. ठीक है, तो कंसोलिडेशन से सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? कर्नाटिक वॉर्स.
ठीक है, द कर्नाटिक वॉर्स. To try to understand this, the beginning of 18th century, we see the decline of Mughal rule. Mughal rule starts declining after the death of Aurangzeb. तो 1707 से मुगल एम्पायर डिक्लाइन करना शुरू करता है. सबसे पहले राजा कौन थे? लेटर मुगल 1707. यस, बहादुर शाह वन. उनको बोलते थे शहनशाह बेखबर ना, शहनशाह बेखबर, कुछ नहीं पता था दुनिया में क्या चल रहा है. तो यार अब बुढ़ापे में राजा बनाओगे, है ना. 63 इयर्स के आसपास थे जब उनको राजा बनाया गया. 63 इयर्स में तो आप एक अगर तलवार निकालो, मेरे दर्द होता है कंधे में. ठीक है, तो शहनशाह बेखबर. So he came to power at a time when he was already old in 1707. So starting from 1707, Mughal Empire was now going towards a decline. Okay, and this presented the opportunity to the British. Aurangzeb, he died in 1707. Whoever came to power, they were not worthy. Okay, including Bahadur Shah I. We had Farooq Shah. In between we also had Jandar Shah, but जो important बने थे उनका नाम रखते हैं. ठीक है. Then we had मोहम्मद शाह. मोहम्मद शाह तो अलग ही लोग थे, इंसान थे, है ना. उनका एक पेन नेम था रंगीला. तो ये इनका सबसे लंबा टेन्योर है. He ruled from 1719 all the way up to 1748. तो लगभग 3 decades के लिए इन्हीं का रूल. During his time, the Mughal Empire further deteriorated. और एक जो सबसे इनफेमस बैटल है, बैटल ऑफ करनाल. तो कौन आए थे इसमें? नादिर शाह. So नादिर शाह came and he completely destroyed the Mughals. पूरी की पूरी उनकी आर्मी, सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो गई. ठीक है. This battle of Karnal of 1739. This shows the British also that the Mughal Empire is now not capable. ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि 1740 से they will start participating in the Carnatic War. Why? Because they learned it from the Karnal. कि जो सेंट्रल एम्पायर है वो जा चुका है. This is a defining battle. हम इसको इस तरीके से सोचना चाहिए that this was a signal for the other powers that things are now going out of hands. ठीक है. तो इनके बाद जो भी है कहानी खत्म हो जाती है मुगल्स की. Weak rulers are going to come on throne, not worth it. On the other hand, we see 3 kinds of states were developing. The one category of states are known as successor states. Successor states means the state which were made by the provincial governors of the Mughals. जो पुराने उनके गवर्नर हुआ करते थे उन्होंने उसको एस्टैब्लिश किया. 3 एरियाज हैं मेजर. एक है बंगाल, दूसरा है अवध, the third is हैदराबाद. ठीक है. 3 एरिया है, बंगाल, अवध एंड हैदराबाद. एंड दीज स्टेट्स आर नोन एज सक्सेसर स्टेट्स. ये हमें इसलिए पढ़नी है बिकॉज जब हम कर्नाटिक वर्ड्स की बात करते हैं तो किससे लिंक होता है? हैदराबाद से लिंक होता है. तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में कि हाँ भाई सक्सेसर स्टेट क्या थी और किसने बनाई थी. बंगाल बनाई किसने? मुर्शीद कुली खान. ठीक है. अवध सादत खान. एंड इफ यू सी हैदराबाद, निजामुल मुल्क बोलते हैं उनको, वो टाइटल था बट उनका नाम था अशफ जहा फर्स्ट. So these 3 people were responsible for the creation of these states. Like here we had Ashaf Jah first, Awadh we had Sadat Khan, Bengal we had Murshid Quli Khan. So these successor states were now rising, and this was going to create a big challenge. Why? Because successor states were nothing but these were the fragmentation of the Mughal Empire. And now the Mughal Empire was getting fragmented. This was going to create challenges in the future. The second category of states, they were the independent states. Which includes Mysore. Mysore will become a strong state under Hyder Ali. Then we see the Rajputs. Marathas जो है उसको हम rebel state का part बनाते हैं. ठीक है. The third category, it is known as the rebel states. Rebel state means who fought against the Mughals and then they were created.
The most important is Marathas. After the Marathas, we also had the Jats, Sikhs, and Afghans. So in a way, if we see the political map of India, India was politically fragmented. Independent means already autonomous थे, और जैसे ही मुगल चले गए तो सारी कहानी क्या हो गई. जैसे मैसूर है, मैसूर जो है एम्पायर कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ. विजयनगर के जो लेटर रूलर्स थे, ठीक है, वो नायक अपॉइंट करते थे, और उन्हीं नायक से जाके किसको बनाया, तो क्रिएट किया. ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक तरीके से पावर वैक्यूम आ गया. जो पावर वैक्यूम आया तो कहानी क्या आती है, खत्म हो जाती है. सक्सेसर का मतलब ये है कि जिन्होंने बनाया दे वर सक्सेसर ऑफ द मुगल्स, मुगल के ही गवर्नर्स थे. बट जो इंडिपेंडेंट है उसमें मुगल का कोई लेवल नहीं, वो अपने इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, ऑलरेडी ऑटोनॉमी थी इनके वजह से, राजपूत थे, ऑटोनॉमी थी. जैसे मुगल्स का जो रूल है वो वीक हुआ, बिकेम इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी की स्टेट्स इंडिया के अंदर डेवलप होती हैं. Now the whole story of modern India is about these states and the fight with the British. ब्रिटिश नहीं सबको टारगेट करेंगे एक एक करके. ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी टारगेटेड वन आफ्टर दी अनदर. ठीक है, बट ये स्टार्ट होने से पहले देयर वाज वन यूरोपियन पावर व्हिच वाज टू बी टेकन डाउन, दैट वाज द फ्रेंच. फ्रेंच एंड द ब्रिटिश, these two were the most powerful personalities, the most powerful countries from Europe. France, it was very strong under the Bourbon dynasty. वहाँ पे Bourbon dynasty हुआ करती थी, जिनमें किंग लुइस 14, 15, 16 ये वहाँ के बड़े बड़े राजा. ठीक है, और बाद में इसी एरिया में हम राइज देखते हैं नेपोलियन का. ठीक है ना, who will be later defeated in the battle of वाटरलू. नाम तो सुना ही होगा वाटरलू का ना, स्कूल में सुना, इतना तो पक्का पता होगा उनके बारे में. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ब्रिटिश की कंसोलिडेशन की, तो ये चीज थोड़ी सी जाननी है बस, that British are going to fight 3 wars with the French. They are known as Carnatic Wars. First, second, and third. First war was from 1746 to 1748. इसको हम क्या बोलते हैं? This war was largely linked to the European fight. यूरोप में एक वॉर चल रहा था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन. क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन. This Austrian war of succession eventually saw British and France on the opposite sides. And since in India also they were on the opposite side, they started fighting in 1740 से bitterness शुरू हो चुकी थी. By 1742 all out war was going on in Europe. इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन. ठीक है ना, तो उसी वजह से यहाँ पर भी वॉर स्टार्ट हो गया. तो फर्स्ट वॉर इज नॉट दैट मच डायरेक्टली लिंक टू इंडिया. इंडिया से उसका कोई लेन देना नहीं. जैसे वहां पे 1748 में पीस ट्रीटी साइन होती है, यहाँ पर भी पीस ट्रीटी साइन हो जाती है, यहाँ भी कहानी खत्म हो जाती है. ठीक है, उस पीस ट्रीटी को बोलते हैं एक्सला चपेल, तो उसको हम एक्सला चपेल बोलते हैं. इट एंड्स देयर. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर फॉर अस इज सेकंड कर्नाटिक वॉर. इस सेकंड कर्नाटिक वॉर आप सब लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखिए कर्नाटिक हम बोलते हैं किसका? दिस इज द एरिया विच इज नोन एज कर्नाटिक. ठीक है, चोलास याद है? चोलास है ना, हमने बात भी किया था उनके बारे में. तो चोलास का जो एरिया था उसको बोलते चोला मंडलम, और चोला मंडलम से निकल बन गया कोरोमंडल. कोरोमंडल के साथ में क्या बन गया? कर्नाटिक. ये सारे सिमिलर नेम्स, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इनके अंदर. ठीक है, ब्रॉडली ये सेम एरिया को डिफाइन करते हैं. ठीक है, so this is the area of Carnatic. And Carnatic, this was a dependency of Hyderabad. The largest state कौन सी थी? Hyderabad. And under Hyderabad's control, there was area of Carnatic. But the big challenge was the founder of Hyderabad. He died in 1748. His name was Ashaf Jah first. Now there was a tussle which was going on in both the places. There was a strong personality in Carnatic also. His name was Dost Ali. Dost Ali also died in 1740s. So a tussle was going on. There was a Nawab of Carnatic by the name of Anwaruddin.
but Anwaruddin was contested by a person by the name of Chanda Sahib. ठीक है, यहाँ पर एक rivalry create हो गई. That's why it is known as a war of succession, which was going on in India. Similarly, in the case of Hyderabad, there was a tussle which was going on between two people. One was Nasir Jung versus Muzaffar Jung. एक तरीके से अगर आप लोग देखेंगे, फर्स्ट Carnatic War, it was war of succession of Europe. Second Carnatic War is the war of succession of India. Two specific areas. One is Hyderabad, the second is Carnatic. यहाँ पर पिक्चर में आते हैं a French governor by the name of Dupleix. ठीक है, Dupleix पिक्चर में आते हैं. Dupleix picks Muzaffar Jung from this side and Chanda Sahib from here. क्योंकि सीधी बात है, डार्क हॉर्स पे पैसा लगाओगे तो जीतोगे तो बड़ा खेलोगे. So he started supporting Muzaffar Jung as well as Chanda Sahib. In fact, 1749, Dupleix plus the French army, Muzaffar Jung and Chanda Sahib, they came together and they defeated and killed Anwaruddin. They killed Anwaruddin. So Anwaruddin, he was killed, and Carnatic region came under the control of Chanda Sahib. Initially, British were not very active politically. जो सेकंड कर्नाटिक वॉर है, अगर आप इसको फेजेस वाइज बाद में इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, अगर हम फेज वाइज देखेंगे, द टू फेजेस ऑफ कर्नाटिक वॉर. ओवरऑल हम 1749 से 1754 तक करते हैं, बट कितने फेज हैं? दो फेज हैं. जो फर्स्ट फेज है, जो आप लोगों को याद रखना है, इसमें लार्जली इट वाज द फ्रेंच. द फ्रेंच क्रिएटेड द अलायंस, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू. उन्होंने हैदराबाद में सपोर्ट किया मुजफ्फर जंग को, एंड कर्नाटक में किसको सपोर्ट किया? चंदा साहिब को सपोर्ट कर दिया. एंड in the first one, in the first phase, 49 to 51, they were largely successful. In fact, अगर इंडिया में एम्पायर बनाने का सपना किसी का पहला था, तो ब्रिटिश का नहीं था, वो किसका था? फ्रेंच का था. और उनके जो गवर्नर थे डुप्लेक्स, उनका सपना था वो. अब सपना किसी का था, है ना, लेकिन बाद में बना किसी और ने दिया. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट सपना देखा था फ्रेंच ने. एंड फर्स्ट फेज में वो बहुत सक्सेसफुल भी थे, बोथ इन हैदराबाद as well as in Carnatic. Their supporters came to power. Dupleix was fairly successful, but इसके बाद आता है एक ट्विस्ट. तो ट्विस्ट लेके आते हैं रॉबर्ट क्लाइव. अभी एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है. रॉबर्ट क्लाइव, ही स्टार्टेड हिज जर्नी एज ए क्लर्क. क्लर्क की तरह उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी. लाइफ में कुछ करते नहीं थे, और एक क्लर्क भी बनवाया था उनके पापा की सिफारिश पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर. तो ऐसे वो इंडिया पहुंचे थे. ओके, एंड देन इवेंचुअली ही वाज अ स्मार्ट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटजीज. इन्होंने स्ट्रेटजी बताई कि भाई कर्नाटिक वॉर में फाइट चल रही है, ठीक है, हम जाके, क्योंकि जो उनकी कैपिटल थी दैट वाज आरकोट. तो आरकोट वाज द कैपिटल ऑफ कर्नाटिक. ठीक है, द कैपिटल ऑफ दिस एरिया वाज आरकोट. बट चंदा साहिब कहाँ चले गए हुए थे? त्रिचिनोपोली. He went to Trichinopoly in order to kill the son of Anwaruddin. अनवरुद्दीन का एक लड़का था by the name of मोहम्मद अली. तो उसको सीज करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे. इस टाइम पे आइडिया आया रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से कि वो गए हुए त्रिचिनोपोली, हमें कहाँ अटैक करना चाहिए? आरकोट पे, कैपिटल पे हमला करना. And this became the difference. This became the changing event of this second Carnatic war. English were able to hold it, है ना, उनको होल्ड कर पाए वो आरकोट को लंबे टाइम के लिए. चंदा साहिब वाज किल्ड बाय द किंग ऑफ तंजौर. उनको किंग ऑफ तंजौर किल कर देते हैं. दिस इज हाउ थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग. तो जो पूरा का पूरा प्लान था, किसका प्लान था? हमारे डुप्लेक्स का. उसको किसने चेंज करना शुरू किया? रॉबर्ट क्लाइव. तो कर्नाटिक एरिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ English, and this happened only because of one person, Robert Clive, while Hyderabad continued to remain under the control of the French. मुजफ्फर जंग है, वो पावर में है, उनकी डेथ होती है तो नेक्स्ट नवाब आते हैं सलाबत जंग.
वो भी निजाम और नवाब, द मीनिंग इज सेम, द आइडिया इज सेम। तो हैदराबाद में उनके बाद आते हैं अपने सलाबतजंग, दैट आल्सो स्टेज बाय द साइड ऑफ फ्रेंच। इसको हम बोलते हैं सेकंड कर्नाटिक वॉर। दिस वॉर फाइनली एंड्स इन 1754। एंड इससे एक जो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज हमें समझ में आती है, दैट इंडिया इज नाउ टू मच डिवाइडेड। India is now too much divided. They are using the policy of divide and rule openly. और जो फर्स्ट स्टेट है जो इससे अफेक्ट हो गई, दैट वाज हैदराबाद। एंड इसके बाद तो बस मौका ढूंढ रहे थे, ऐसे एक एक करके सारी स्टेट्स के साथ यही किया जाए। दिस बिकेम द रोल मॉडल कि जो हैदराबाद में किया है या फिर जो कर्नाटक में किया, विल डू इट एवरीवेयर। देन केम द अपॉर्चुनिटी, और थर्ड कर्नाटिक वो थोड़ा सा बाद में स्टार्ट होगा। थर्ड कर्नाटिक वो स्टार्ट्स इन 1758। 1758 7 ईयर वॉर 56 में स्टार्ट हो जाता है, और जो इंडिया में थर्ड कर्नाटिक वॉर स्टार्ट होगा, दैट स्टार्ट अराउंड 1758, है ना। 56 जो है वो 7 ईयर वॉर स्टार्ट हो जाता है इन यूरोप। इंडिया के अंदर लार्जली जो मेन फाइटिंग है, फ्रॉम 58 टू 1763, दिस इज नोन एज 7 ईयर वॉर। इसके फाइट स्टार्ट होने से पहले एक स्टेट वल्नरेबल हो जाती है, एंड दैट इज द स्टेट ऑफ the most important state of India, and that was Bengal. Bengal, the person who was ruling, he was Alivardi Khan. So Alivardi Khan, he died in 1756, and he died, and before death, he had already chosen his successor. His successor was whom? Sirajud-Dowla. Sirajud-Dowla, now he was the person who was in charge. A young person, dynamic person came into picture. Okay? But the problem with Sirajud-Dowla is that he was very high-handed. He came to power in 1756. When he came to power, the British and French, they were preparing for war, because already 7 year war had started in Europe. Same year, 1756. That's why both of them, they started fortification. इन्होंने अपने अपने एरिया में बंदूक लगाना चालू कर दिया। But if a war is going to start, so that we can defend our own area. This was not liked by Sirajud-Dowla. He thought this area is mine. क्या कर्नाटक में बंद हो चुका था। बाय 1754 द सेकंड कर्नाटिक वॉर वाज ओवर। यूरोप में चलना गया था। यूरोप में 7 ईयर वॉर स्टार्ट हो गया 1756 के। तो दे रियलाइज कि यार अगर वहां पे पिछली बार जब लड़ाई हुई थी ऑस्टिन वॉर ऑफ सचिन, तो बाद में कहाँ लड़ाई हो गई थी? इंडिया के अंदर भी लड़ाई हो गई थी। तो दे थॉट कि हम अब क्या करेंगे, फोर्टिफिकेशन चलते हैं, फोर्ट के ऊपर बंदूकें रखो और चालू करो। बट दिस वॉज नॉट लाइक बाय सिराजुद्दौला। ही थॉट दैट यू आर नाउ वर्किंग अगेंस्ट माई सॉवरेंटी। यहाँ के सॉवरेन तो वो थे। विदाउट हिज परमिशन हाउ कैन someone put guns at the top? So as a result of this, सिराजुद्दौला ने वार्निंग दी। He gave warning to both British as well as French कि बंद करो ये ड्रामा। फ्रेंच ने इनकी बात मान ली, उन्होंने बंद कर दिया। ब्रिटिश ने नहीं मानी। ब्रिटिश तो ब्रिटिश थे, मानने वाले थोड़ा ना थे इतना जल्दी से। ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट। देन सिराजुद्दौला व्हाट ही डिड, ही अटैक्ड कलकत्ता। ठीक है, जो उनका फोर्ट का एरिया था उसको उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया। एंड देन एक इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। Black hole tragedy means that after he took control of this fort of the region of Calcutta, more than 100 people, they were kept in one room, which was not having proper ventilation. So as a result of this, majority of them they died by the very next day. This is known as black hole tragedy. इसको बोलते हैं black hole tragedy. Once this happened, okay, again Robert Clive started his journey from South India. ठीक है, तो ये कहानी है जून की। This happens around June 1756. From October onwards, he will start from South India. He will reach North India in December. और सबसे पहले वो पहुंचते हैं कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता पहुंचते हैं। वहां पे नवाब के ऑफिसर थे मानिक चंद।
तो मानिक चंद ही वाज हैविंग द कमांड ऑफ दिस फोर्ट, जो किसने कब्जा कर लिया था? सिराजुद्दौला ने। आते ही सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने पैसे दिखाए एंड मानिक चंद पिघल गए। फ्रॉम देयर ही रियलाइज्ड दैट दीस ऑफिसर्स ऑफ द नवाब दे आर कंप्लीटली करप्ट। मानिक चंद भागे भागे गए कि मैं तो बहुत मारा, ठीक है, मैं मुश्किल से जान बचा के भागा हूँ, बट इन रियलिटी ही एक्सेप्टेड ब्राइब एंड इवेंट टू द कैपिटल। कैपिटल क्या थी पूरे के पूरे बंगाल की? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद वाज द कैपिटल। ही रैन अवे टू मुर्शिदाबाद बताने के लिए कि क्या गजब हो गया, आप देखो क्या हो। ये सोच के हमारे बाप भी घबरा गए, कैसा इंग्लिश क्या चीज लेके आ गया कि मेरा नवाब भागते भागते मेरे पास पहुंच गया। मुझे थोड़ा ना पता था कि पैसे लेके आए, ऑस्कर मिलना चाहिए। उनको ये समझ नहीं आया कि एक्टिंग चल रही है या सच्चाई चल रही है उसमें। तो घबराहट में उन्होंने जाके एक ट्रीटी साइन कर ली, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर, जो फैब 1757 में साइन की जाती है। अंडर दिस ट्रीटी नवाब एक्सेप्टेड एवरीथिंग, सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है आप फोर्टिफिकेशन कर लो, जो गलती हुई है मैं उसके पैसे भी दे दूंगा, सब कुछ हो जाएगा, सारी बातें पूरी हो गई बाय फरवरी 1757। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव पहुंच गए उनके कोर्ट में। कोर्ट में मीर जाफर ने इशारा किया, इधर आओ, मेरे पास एक डील है। तो देन ही रियलाइज दैट द होल कोर्ट इज अगेंस्ट सिराजुद्दौला। बाय दैट टाइम द होल थिंग वाज डन। फैब के बाद उन्होंने पूरी की पूरी कंस्पिरेसी तैयार करी। ऑल पीपल केम टू द सेम साइड, जिसमें हमारे कौन कौन है? मीर जाफर है, उसके बाद में एक फैमिली हुआ करती थी मर्चेंट्स की, जगत सेठ। तो पूरी जगत सेठ की फैमिली थी, एक्चुअली वो अकेले इंसान नहीं था, पूरी की पूरी फैमिली थी। द होल फाइनेंस ऑफ बंगाल वाज टेकन केयर ऑफ बाय जगत सेठ फैमिली। तो ये भी सारे के सारे किसकी तरफ चले गए? दे वेंट टुवर्ड्स द साइड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, ओमिचंद वो भी मर्चेंट थे। हाँ, ठीक है। ये सारे के सारे लोग एक तरफ हो गए। इनफैक्ट वहां पे अर्मेनियन भी हुआ करते थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। ही वाज अ टाइकून एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वाजिद करके कुछ नाम था उनका। तो अर्मेनियन लोगों ने भी सपोर्ट किया रॉबर्ट क्लाइव का। तो सारी कंस्पिरेसी तैयार हो गई कि भाई क्या होगा और किस तरीके से होगा, एक्सेट्रा, एवरीथिंग वाज नाउ क्लियर। मार्च 1757 रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट अटैक्स द फ्रेंच। फ्रेंच की जो सेटलमेंट थी कौन से एरिया में थी? चंद्रनगर। जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे किसकी सेटलमेंट थी? ब्रिटिश की भी थी और फ्रेंच की भी थी। सबसे पहले उन्होंने फ्रेंच की सेटलमेंट को अटैक किया, क्योंकि उसको पता था that if tomorrow we have to give a final kind of stance to this conspiracy, तो उसको रोकेगा कौन आके? फ्रेंच। पहले फ्रेंच को डिफीट किया। and then in June 1757 we had the battle of Plassey, and in this battle of Plassey, as all of us can understand, जो पूरी की पूरी आर्मी थी नवाब की, वो 50,000 की थी सिराजुद्दौला की। 40,000 सोल्जर थे हमारे मिलिट्री कमांडर मीर जाफर के साथ, जो लड़े ही नहीं। they were standing outside the battlefield. So as a result of this, eventually Sirajuddaulah, he eventually was murdered by the son of Mir Jafar only. He lost this battle, and after this battle, the amount of money which now went to the British was huge. British now controlled the state of Bengal. First, they appointed Mir Jafar as the Nawab as per the treaty. Okay, so from 1757 itself, but he was replaced in 1760. 3 साल का टेन्योर था इनका। रीजन बीइंग ही वाज नॉट एबल टू पे द मनी व्हिच वाज आस्क्ड बाय ब्रिटिश फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनके ऊपर कर्जा था 25 लाख का। ही वाज नॉट एबल टू पे द कंपनी। तो फाइनली मीर जाफर को रिप्लेस किया गया। हिज सन इन लॉ मीर कासिम, वो ब्रिटिश के पास पहुंचे, कलकत्ता काउंसिल हुआ करती थी, उसके पास पहुंचे। सर साहब बताओ कितना पैसा चाहिए, मैं ला के दूंगा सारा का सारा पैसा। Mir Kazim, he offered money. Mir Kazim offered new territories. Mir Jafar behaved like a perfect puppet, and because of this, Mir Kazim was given the command. They came to power in 1760, but his rule was a bit different from Mir Jafar. Mir Kazim started behaving like an independent ruler. What are the characteristics of an independent ruler? Like
नंबर वन, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। इनको ये चीज समझ में आ गई कि जब तक मैं यहाँ बंगाल के अंदर कैपिटल रहेगी, दिक्कत चलती रहेगी। इसको किस तरफ शिफ्ट करते हैं? बिहार की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर so that he can have a peace of mind. Munger became his capital. Second, formed an arms factory here. ठीक है? He abolished the system of dastaks. दस्तक क्या हुआ करते थे? ट्रेड पासेस एक तरीके से, ठीक है? They were like trade passes which were given. दस्तक का सिस्टम ही बंद कर दिया कि भाई आज से यूरोपियन और इंडियन सबके लिए बराबर टैक्स, टैक्स दो ही मत, चाहिए ही नहीं। That's why he behaved like an independent ruler. और ये चीज ब्रिटिश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ओके, इनिशियली तो इन्होंने बिल्कुल पपेट की तरह बिहेव किया, पैसे दे दिए, सब कुछ दे दिया, बट लेटर ऑन ही इवेंचुअली स्टार्टेड बिहेविंग लाइक एन इंडिपेंडेंट रूलर। दैट्स व्हाई इनकी झड़प हुई ब्रिटिश के साथ, एंड मीर कासिम लेफ्ट बंगाल इन 1763। देन ही वेंट टू द रीजन ऑफ अवध, वहां पे ये अलायंस क्रिएट करते हैं। द अलायंस वाज क्रिएटेड विद शाह आलम सेकंड एज वेल एज शुजा-उद दौला। तो भाई सिराजुद्दौला और शुजा-उद-दौला के नाम में कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है? Sirajuddaulah was now gone, long gone, 1757. This was Shuja-ud-Daulah, and he was from which state? Awadh. Again, the second successor state. ठीक है? तो वहां पे वो पहुंचे. This battle, which was fought in October 1764, this is known as the Battle of Buxar. So by 1764, the British were able to capture the whole of Bengal, and this time with iron fist. पहले की तरह नहीं कि कोई भी आके हमें चैलेंज कर पाए। Like in this case, Mir Qasim was trying to challenge them, but now it was gone, dusted. इसके बाद में we see the death of Mir Jafar and his son was put on throne. But over a period of time, within the next few years, they would completely shift the administration. And by 1772, we see the Regulating Act and the system of creating the modern governors. It started. The Governor General of Bengal, जो कि Regulating Act के अंदर बनाया जाएगा from 1773 onwards. Anyway, so that's the part of different administration. But this is how the region of Bengal came under their control. And as I was telling you, after Second Carnatic War, they captured Bengal in Battle of Plassey. ठीक है? तो Battle of Plassey में उनको उनके पास पैसा आ चुका, and that's why when they fought with the French in the Third Carnatic War, it was largely fought from 1758 to 1763. They were able to defeat the French easily. There is a famous battle by the name of Battle of Vendivash, in which the French was defeated thoroughly in 1760. Pondicherry was captured in 1761. It was captured in 1761. And finally, a peace treaty was signed after the 7-year war. This is known as Treaty of Paris. And in with this, it was decided French will not take part in any political activities after that. It was the end of this. So, by the early 1760s, अगर हम बात करें early 1760s की, so they were able to defeat French. The French were now out of the picture. That's number one. Number two, they were also able to have a big impact on which? Bengal. And सिर्फ Bengal ही नहीं, when they fought the Battle of Buxar, they also defeated Awadh. इसलिए कौन सी ट्रीटी साइन की? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765. एक शाह आलम सेकंड के साथ ट्रीटी साइन की, और जो दूसरी ट्रीटी थी, द सेकंड ट्रीटी, इट वाज साइंड विद हूम? इट वाज साइंड विद शुजा-उद-दौला. So Awadh also indirectly came under the influence of British. ठीक है? तो पूरी की पूरी जो स्टेज है अब सेट हो रही है फॉर द फर्दर एक्सपेंशन, एंड विच ऑल ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है? तो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस के लिए पीपीटी आप लोगों को दे देंगे. यही कहानियां इसके अंदर है ब्रॉडली. ठीक है? एंड बंगाल एज वी हैव डिस्कस्ड, द पर्सन वाज सिराजुद्दौला. सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड, conspiracy was there, right? And finally we see the role of multiple people responsible for that.
and the Battle of Buxar, in which we see the defeat of Mir Kazim. Mir Kazim fled after that. Okay, Mir Kazim fled after that, and he offered everything which was possible to them. Yes. Hmm. 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 Christian missionaries. देखिए, it is not just about religion. The most important thing is this, that British were having the strongest navy. ठीक है? आपको वॉर जीतने के लिए क्या क्या चाहिए? What are the ingredients you need? You need finance. Finance है बंगाल से. ठीक है? The finance came from Bengal. Navy, they were already having a superior. Third, it was their settlements. देखिए, सबसे अनस्ट्रेटेजिक सेटलमेंट कौन सी होती है? जिसको कोई भी घेर सके. और फ्रेंच की ऐसी अनस्ट्रेटेजिक सेटलमेंट थी पौंडीचेरी. पौंडीचेरी बिल्कुल ओपन कोस्ट के ऊपर. बट अगर आप जाएंगे कलकत्ता, तो कलकत्ता एक रिवरिन पोर्ट के ऊपर है. नॉट दैट इजी टू कैप्चर इट. And while the British were having multiple settlements, and all of them were good enough, like Bombay, Calcutta, as well as Chennai or Madras. जब हम सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं, it eventually they are the responsible for the victory of over the French. It's nothing to do with religion as such. Because both of them did not pursue the Christian missionary activities in large scale during that time. They were cautious. In fact, the British will remain cautious with respect to Christian missionaries till early 19th century. 1813 में जाके पहली बार चार्टर एक्ट में अलाउ किया जाता है कि अगर आप चाहो तो यू कैन कम टू इंडिया फॉर मोरल एंड रिलीजियस अपलिफ्टमेंट ऑफ द मास. बट दैट कम्स इन 1813. इट डज नॉट हैपन बिफोर. तो एनीवे, जो बाकी फैक्टर्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट. देखिए, फाइनेंस से बड़ा कोई फैक्टर है क्या? अब इंडिया के पास वेपन्स हैं, पाकिस्तान के पास नहीं है. उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? फाइनेंस. हमारे पास पैसा है, MS-400 लेके बैठे हैं. उनके पास नहीं है, वो चाइनीज चढ़ावा लेके बैठे. ठीक है, टाइम पे चले नहीं वो. एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया. तो किसी भी फाइट में सबसे बड़ा चीज क्या होती है? फाइनेंस. फिर टेक्नोलॉजी आती है. कम से कम पैसा है, टेक्नोलॉजी नहीं तो खरीद लोगे ना. लेकिन पैसा भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है. डबल ब्लंडर हो गया लाइफ का. फिर अब वॉर से भी समझ में आ गया ना, जीतना तो क्या चाहिए. अब हमारे पास मान लीजिए नहीं है उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, बट स्टिल वी आर एबल टू अप्रोच रशिया, वी आर एबल टू अप्रोच एनी ऑफ देम. फ्रेंच राफेल खरीद लिया, किसी से S-400 ले लिया, किसी से कुछ और ले लिया, किसी से ड्रोन ले लिए. वहां टर्किश ड्रोन चल रहे थे, सिर्फ लाइट शो चल रहा था शादी की तरह, है ना. तो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट एवरी टाइम व्हेनेवर देयर इज वॉर, few variables are going to be there. सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके पास फाइनेंस होना चाहिए. नंबर 2, यू शुड हैव टेक्नोलॉजी. नंबर 3, लीडरशिप. द लीडरशिप ऑफ इंग्लिश वाज सुपीरियर. ओके, एंड सबसे अच्छी चीज इंग्लिश में क्या थी? टॉप लीडर्स वर आल्सो गुड एंड द सोल्जर्स वर आल्सो गुड. दे वर डेडिकेटेड टू द कॉज. फ्रेंच के लोग उतने डेडिकेटेड नहीं थे. द मोस्ट डेडिकेटेड पर्सन अमंग द फ्रेंच वाज डुप्लेक्स. उसको रिकॉल कर लिया था फ्रेंच ने इन 1754. उनको बताया गया कि भाई नहीं, आप बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो, वापस चलो. उन्होंने कहा ठीक है भाई, ले चलो वापस चलो. उनके बाद जो गवर्नर आए, काउंट डे लेली, ही वॉज नॉट स्ट्रेटेजिक इन नेचर. इनफैक्ट जब काउंट डे लेली हारे थे, ठीक है, तो उनके जो नीचे वाले लोग थे उन्होंने जश्न मनाया, हम हार गए. हाँ, मतलब ये सिचुएशन थी. देयर वाज नो कॉमरेडरी. द वर्ड कॉमरेडरी कम्स फ्रॉम फ्रेंच, बट दे वर लैकिंग इट इन इंडिया व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मिलजुल के इसके लिए. देखिए, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से अब हमारे ऑप्शनल का जो है इंपॉर्टेंट एरिया स्टार्ट होता है. Like the first area from where UPSC asks question is the factor responsible for the victory of British. यहाँ से start होता है. Battle of Plassey, Battle of Buxar. What was the impact of Plassey? What was the impact of Buxar? और हमें इसके अंदर थोड़ी सी हिस्टोग्राफी भी ऐड करनी पड़ेगी. ओपिनियंस ऐड करने पड़ेंगे हिस्टोरियंस के. अच्छे अच्छे कमेंट्स याद करने पड़ेंगे.
ठीक है। जैसे मान लीजिए प्लासी है, प्लासी के ऊपर एक बहुत अच्छा कमेंट आता है हमें हिस्टोरियन के.एम. पानीकर। प्लासी वाज एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन in which Mir Jafar and bankers of Bengal sold the Nawab to the British. अब ये सुनने में अच्छा लगता है, पोएटिक लगता है। So in our option we have to learn a little bit of the language of the historians themselves. जीएस में क्या होता है कि हम बेसिक आंसर लिख के चल जाएगा काम, बट ऑप्शनल में थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाना पड़ता। दैट्स व्हाई हिस्टोरियोग्राफी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, now Bengal was under their control, Awadh was under their control. From the Carnatic wars, they were able to get control over the areas of Hyderabad and they were able to get control over the region of Carnatic itself. The next major area है वो कौन सा है? Mysore. Okay. Now all of you should know about this that जो Mysore state है ये किसका सक्सेसर है? It's the successor of the Vijayanagar Empire. वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। Then the area which it by 1761 it comes under the control of Hyder Ali. Comes under the control of Hyder Ali. इनफैक्ट जो डायनेस्टी इनको रूल करती है उसको हम बोलते हैं वोडियार डायनेस्टी। कॉल इट वोडियार डायनेस्टी, हम वोडियार डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है। इट इज नोन एज वोडियार डायनेस्टी। So Wodeyar dynasty it was sidelined by Hyder Ali, and by 1761 he started building a strong state of Mysore. When he started building a strong state, naturally it was going to come in conflict with English today or tomorrow, and that came in 1767 to 1769. ठीक है, तो पूरा इशू था, it was over a territory. ठीक है, the whole issue was over a territory. What the British did, British got this area from Nizam known as Northern Sarkars. ठीक है, so Mysore was having territorial conflict with the region of Carnatic as well as this eastern part of the region of Nizam. और British ने by sheer dominance took the area of Northern Sarkars. That's why Hyder Ali he formed an alliance with the Nizam of Hyderabad and they started fighting against the Carnatic. Okay, this is how the war began. During the later era, he went and directly went to the Madras region. Chennai ही पहुंच गए. The British they were unaware, they were not ready for this fight, and the British they accepted defeat. So the war, the first war, it ended in victory for Hyder Ali. Hyder Ali, he was a very good diplomatic man. He knew how to use the resources around himself. He befriended the Nizam in order to fight against the British. And that's exactly what happened. And that's why later on they signed the Treaty of Madras. And in this Treaty of Madras, it was said that if any other power is going to attack Mysore, then help कौन provide करेंगे? British. The British were going to provide. Why this is important? This is going to become responsible for Second Anglo-Mysore War. Why? During this phase, from 1769 to 1780, the Mysore territory was invaded by the Marathas, but no help came from English. That's why Hyder Ali started befriending the French. French के close हो गए इसके बाद में, and this was not liked by the British. The British were already fighting the American War of Independence from 1776 till 1783. They were already fighting American War of Independence. ठीक है, तो जब फ्रेंच के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव हो गए हैदर अली, it eventually led to the Second Anglo-Mysore War because he was having good relationship with the French. They fought for 4 years. Hyder Ali died in 1782. Then it was carried forward by his son. His name is Tipu Sultan. Tipu Sultan carried it for next 2 years. In 1784, we see the end and we see the signing of Treaty of Mangalore. Treaty of Mangalore was signed and again a draw. Okay, it was more of a draw. Whichever territories were occupied by each other were exchanged, prisoner of war were exchanged, plus they said probably we're going to have a friendship in the future. But the biggest problem with Tipu Sultan was not a very diplomatic person. He always used to hate the British so much. In fact, these two people could not sit in the single room.
They can never face each other eye to eye. The third Carnatic War was created by a challenge which happened over certain territories. Now there were two areas. There was area of Travancore and then there was area of Cochin. Travancore, it was under the protection of British. Cochin was a dependency of Tipu Sultan. Certain land was purchased by Travancore from the area of Cochin. Land purchased earlier. In fact, this land belonged to the Dutch, but it came to the territory of Cochin. This was not liked by Tipu Sultan. How can you purchase land which belongs to me? He eventually became very angry over it and he started giving warning to Travancore कि land वापस करो. Travancore से हमें तो पैसे देके खरीदा, हम क्यों वापस? There's a transaction which is there. At this, Tipu Sultan attacked Travancore. Tipu Sultan was under the protection of British. British were looking for an opportunity to fight with Tipu Sultan. The third Anglo-Mysore war, it was not something which could not have been avoided. Easily avoid किया जा सकता था. But intention किसकी थी? British की. मौका मिल जाए बस किसी तरीके से. In fact, the Governor General in India at this point of time was Cornwallis. Cornwallis was the person who lost in America. अमेरिका में जब ये लोग हारे थे, ठीक है, when the America became independent in 1781, they lost in the Battle of Yorktown. Cornwallis was the person who surrendered there. तो उनको रात को सपने में आते था डिफीट की एक अंपायर तो मैं खराब करके आया हूँ, अब दूसरा भी ना कर दूं. So that's why he took so much of initiative in India. He became responsible for permanent settlement. He became responsible for civil services. He became responsible for fighting against Mysore. And this third Anglo-Mysore war is the most defining war. Okay, Tipu Sultan was not a good diplomat. In this war, British took the help of both Nizam as well as Marathas. Both came to their side and Tipu Sultan had no chance. He was defeated. In 1792, Treaty of Seringapatam was imposed upon him. In this treaty, there were certain provisions, important provisions. A war indemnity of 3.3 crore rupees was put on. 3.5 करोड़ के आसपास समझ लीजिए उस टाइम पे. टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी. आज नहीं, हम आज भी खेल रहे कौन बनेगा करोड़पति. ब्रिटिश उसी टाइम खेल के चले गए कौन बनेगा करोड़पति. 3.3 crore rupees. Half of the territory of Mysore was taken. It was divided among the British, the Marathas and the Nizam. और जब टीपू सुल्तान ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो जस्ट लाइक ए हिंदी मूवी जिसमें विलन क्या करते थे, फैमिली मेंबर्स को साथ ले जाते थे. द ब्रिटिश टुक 2 of his sons कि भाई जब पैसा आएगा तब ये वापस आ जाएंगे, तब तक ये हमारे मेहमान हैं. So like this, the Treaty of Seringapatam was less of a treaty, it was more of an extortion, and it was done by the British. So by 1792, Mysore became very weak. It was now not possible for it to now go forward. पैसा भी चला गया, टेरिटरी भी चली गई, इज्जत भी चली गई, अब बच्चे भी चले गए ना. वो तो वापस आ गए बाद में when he was able to repay, but this created a big challenge for Tipu Sultan. After this, in 1798, we see the entry of Lord Wellesley. Lord Wellesley, now this was a person who was a believer in capturing as many territories as possible. I hope you know his name. He is also responsible for the Treaty of Subsidiary Alliance. इसको यही system को यही form करेंगे आज. So he came to India and he started analyzing कि कौन-कौन सी state French के आसपास. There was a rise of France after the revolution of 1789. और उनके जो सबसे important personality that was Napoleon. Napoleon was rising in Europe at this point of time. So he realized कि कौन-कौन है जो फ्रांस के पास. So he sent a letter to Tipu Sultan कि भाई आपके ऊपर बहुत सारे चार्ज लग रहे हैं, आप फ्रांस के बहुत क्लोज हो
एंड आपके पास दो ही ऑप्शन है, ईदर यू साइन द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस और द अदर ऑप्शन इज वॉर। दो ही ऑप्शन है। टीपू सुल्तान said, I will not sign the treaty of subsidiary alliance. Let us fight war. But Tipu Sultan was no way close to the power of the British. He was defeated in 1799. He was given the option to rule on the behalf of English and surrender. He said, I choose death rather than serving you. So Tipu Sultan, he was killed in the fourth and final battle, and this ended the Anglo-Mysore rivalry in 1799. In fact, this area came under the control of the British, and the nominal ruler of the Vodya dynasty was reinstated in this region. तो वहां क्या हुआ, कहानी खत्म, ठीक है। एंड दे ऑल्सो साइन द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस लेटर ऑन। तो ये है मैसूर की कहानी, ठीक है। यस, कौन सा? एग्जैक्ट मुझे ईयर नहीं पता कब किया था, बट टीपू सुल्तान वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलप। इनफैक्ट जो रॉकेट्स बनाए गए थे वो ब्रिटिश लेके चले गए थे इनके, टू सी कि किस तरीके से उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश की। और बाद में इवन अगर आप नासा में भी देखोगे तो इवन इन नासा दे हैव अ पिक्चर ऑफ द रॉकेट्स ऑफ टीपू सुल्तान, बिकॉज ही वाज एन इनोवेटर। अगर आप टीपू सुल्तान की पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हो, थोड़ा सा वैसा इंसान था यार कि मतलब थोड़ा ना कि भाई फोकस वाज ऑन क्रिएटिंग गुड एडमिनिस्ट्रेशन। लाइक बहुत लोग ये पूछते हैं क्या इंडिया मॉडर्नाइज हो सकता था विदाउट ब्रिटिश, यस और नो। बट उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा ना इंडिया में रूलर कौन से थे जो मॉडर्नाइजेशन के बराबर थे। अब मोहम्मद शाह रंगीला तो मॉडर्नाइज नहीं कर पाते, वो तो पेशकश करके चलो नाचो मेरे साथ में कथक करो, मतलब वो तो नहीं हो पाता। मतलब तो यू हैव टू लुक फॉर सर्टेन पर्सनालिटीज who are having that kind of integrity that they could take us towards modernization। तो ऐसा एक इंसान टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम था काफी मॉडर्न, सेंट्रलाइज सिस्टम का इन्होंने स्टेट क्रिएट किया था। इनका जो इवन लैंड सेटलमेंट था विद द पीजेंट्स, इट वाज जस्ट लाइक द रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इनकी आती है। इनका इनको बोला जाता है एन अल्टरनेट एलिमेंट इन 18th century। अल्टरनेट एलिमेंट मींस somebody was way different than the others, जिनकी पर्सनालिटी बाकी लोगों से काफी अलग थी। बट इनके खिलाफ दूसरी दिक्कत ये थी दैट ही वाज नॉट अ वेरी सेकुलर पर्सन। Okay, he was not a very secular person, so he was more biased towards Islam, even though naturally he was a follower of Islam, but he did not respect the people who were following Hinduism। That's why आप देखिए हर साल टीपू की जो जयंती होती है उस पर कुछ लोग डंडा लेके आते हैं और कुछ लोग माला, ठीक है। So it's a very, he is a very divisive figure in कर्नाटका। वहीं पाकिस्तान में he is considered the last hope। After he was defeated, India was bound to come under the British rule। अब ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, ठीक है। ये हम लोगों की हिस्ट्री नहीं है, हमें बस जानना होता है। तो देखो हिस्ट्री इज अबाउट डायलॉग्स, हिस्ट्री इज अबाउट डिस्कशन, योर व्यूज अगेंस्ट माइन। तो जो कुछ अच्छे अच्छे हिस्टोरियंस हैं तो उसमें यही बोलते हैं उनमें से कि भाई ये फ्रॉम द साइड ऑफ टीपू सुल्तान दैट ही वाज एन अल्टरनेट एलिमेंट इन 18, someone who was a believer in modernization। He used to call himself Citizen Tipu। He was influenced by the ideas of French Revolution। Now, French Revolution was based upon the ideas of equality, liberty, and fraternity। तो एक तरीके से आप सोचोगे जब हम बात करते हैं मॉडर्न आइडियाज की तो उनमें बिलीव करते थे। ओके, ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द जैकोबियन क्लब, है ना, कि फ्रांस के अंदर दो क्लब हुआ करते थे, है ना। तो उनमें से एक था जैकोबियन क्लब, दूसरा होता था गिरोंडिस्ट बोलते थे उनको, है ना, गिरोंडिस्ट बोलते थे। तो जैकोबियन क्लब के मेंबर बने हुए थे। इंडिया के अंदर भी उन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। मतलब बहुत सारी चीजें इन्होंने करी थी विच वाज मॉडर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 18th century। बट हिज बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज दैट ही वाज नॉट अ गुड डिप्लोमैट। He was not a good diplomat। He should have tried to create an alliance with the Marathas, with the Nizam, if he wanted to fight against the British। खुद से सबके खिलाफ चल दिए। बापू की वो थी ना एकला चलो, तो एकला चलने लग गए हैं। एकला चल के हर बार नहीं मिलता यार।
You have to see, in personal life you can go alone, but as a nation you can never go alone. गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल तक काम कर गया, आज आज नहीं काम करेंगे। उनमें से एक यही है, अकेला चलो, गो अलोन, क्योंकि पॉलिटिक्स वैसे नहीं चलती है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। एनीवे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। So this ended the challenge of Mysore. The next important state, which was probably the most important state with respect to India, and that was the state of Marathas, or the area of Marathas. Okay? In fact, ये बहुत famous dialogue है कि आप याद कर सकते हो. There was one General George Harris. There was one General George Harris. Once Tipu Sultan was killed. ये कमेंट देखिए, क्या कमेंट आया? Now India is ours. अब ये हमारा है. Because he was the most formidable enemy of the British. He would never accept any treaty. He would never accept disrespect. He would never accept any kind of thing from the side of the British. He would always choose fight over signing anything. He was that kind of a person. So that's why when he was killed, the war was over. Okay, and as I'm telling you, it was done with the help of Marathas and Nizam. तो उस समय एक चीज बहुत पता चलती है, that India was not won by the British alone. We were fighting against ourselves. And why was that happening? There's a major reason for that. ये हो क्यों रहा था? Yes, because India was not having nationalism. If we would have been having nationalism, then हम ये सारी चीजें होती क्या हमारी? नहीं होती. The idea of India was not there. India was divided among so many states. Okay, India was divided among so many states. So the idea of nationalism was not there in India in 18th century, and even the first half of 19th century. Only by 1870s we see the rise of the Indian nationalism in a true sense, and by 1885 we see the creation of Indian National Congress. तो कभी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो हमेशा यही चीज बात करनी है. And why did it happen? It happened because we were not having modern nationalism. That's very true. Okay. Next important power for us was Marathas. Very, very important. In fact, the most important power was Marathas. We have in the previous medieval also we had discussed about the various Peshwas. ठीक है, तो कौन-कौन famous Peshwas थे? So when we discuss about Marathas, the rule of Marathas can be divided into phases. First, from 1674, the creation of the Savrajya, till 1713. This is the phase of Chhatrapati. Chhatrapati was the title which was taken by the monarchs of the Marathas, like Chhatrapati Shivaji Maharaj, then we had Shambhaji Maharaj, then we had, in between we had Rajaram also, okay, and then finally we see the Shahu. Tarabai, she also, after the death of Rajaram, she also continued, and by 1707, when Shahu came out of jail, again he took the title of Chhatrapati. In 1713, he appointed Balaji Vishwanath. So this is the era of Peshwa. Look, Shivaji Maharaj, he had this Ashtapradhan system. Ashtapradhan means 8 important officers of the state, and the most important officer among them was Peshwa. Okay, so Peshwas, it's not like that for the first time it was appointed in 1713, but strong Peshwa, they came from 1713 onwards. The most important one in the initial phase, it was Balaji Vishwanath, then his son Bajirao. First, he was a very important personality. Then Balaji Bajirao. Balaji Bajirao was there eventually. He was the one when they fought the third battle of Panipat, and after their loss, he could not recover and he died out of the shock in 1761. After 1761, we see the again rebuilding phase of the Marathas. It's not like that the Marathas were completely finished after the third battle of Panipat. We again see the rebuilding. The first major Peshwa was whom? Madhav Rao. Okay? So we see the rise of Madhav Rao. So Madhav Rao ruled from 1761 to 1772. In 1772, we see the death of Madhav Rao. And after that, the problem starts in the Maratha kingdom, which will eventually take them towards the first Anglo-Maratha war. Okay, which will eventually take them towards the first Anglo-Maratha war.
Try to understand how. So Madhav Rao, he died in 1772. Now he was not having any son, so his brother Narayan Rao came to power. He became Peshwa. Narayan Rao, he was murdered by his palace guards in 1773 and probably on the instructions of Raghunath Rao. Now, Raghunath Rao, he was the uncle of Narayan Rao. Okay, so he started ruling from 1773, but then we witnessed a posthumous son of Narayan Rao. When he died, his wife was pregnant and eventually they had a son. So हम क्या बोलते हैं? Posthumous son. When the father is already dead and then there is the birth of the child. तो उसको क्या बोलते हैं? Posthumous son. Okay. So he had a posthumous son. और ऐसा होते ही किसके पैरों के नीचे से जमीन चली गई? रघुनाथ राव. He wanted to be पेशवा, but as per the rule, अब किसका बेटा पेशवा बनने वाला था? नारायण राव. And that took, उसको नाम भी दे दिया गया माधव राव सेकंड. Was given the name Madhav Rao II, and there was a very strong personality at this point of time, Nana Fadnavis. Nana Fadnavis, he supported his posthumous son. That's why in 1774 Raghunath Rao, his tenure ended. Okay, his tenure ended, and broadly after that he met with the British. He signed what is known as the Treaty of Surat. So in 1775 he signed this Treaty of Surat so that he could get some support in order to become Peshwa. Because उनको एक ही चीज चाहिए थी कि मुझे क्या बनना है? पेशवा बनना है. लाइफ का एक ही ऑब्जेक्टिव. ठीक है. So he wanted to become Peshwa so bad he accepted this treaty with the British. Now this was not acceptable to the whom? It was not acceptable to the Marathas. So naturally it led to the beginning of the first Anglo-Maratha war. Why? Because British were supporting the candidature of Raghunath Rao for the post of Peshwa. That's why it eventually became the first Anglo-Maratha war. This continued for a very long period. Okay. Eventually by 1781 both sides had realized कि भाई कुछ होने वाला है नहीं. It was more or less a kind of a draw. And by 1782 they signed the Treaty of Salbai. They signed the Treaty of Salbai, and with this peace was now going to come for the next 20 years. And British accepted, we will not take the cause of Raghunath Rao. Raghunath Rao's cause was not taken after that, and this eventually ended the first Anglo-Maratha. The second Anglo-Maratha war, it happened, yes. हाँ, बीच में भी देखो इवेंट्स तो बहुत सारे. ठीक है, 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत आती है. देन कम्स द ट्रीटी ऑफ पुरंदर. एक्चुअली हुआ क्या था, जो ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ सूरत, इट वाज साइंड बाय द बॉम्बे गवर्नमेंट. Now Bombay government was wanted to support Raghunath Rao, but Calcutta government was not in support. तो कलकत्ता गवर्नमेंट का वहां से ऑफिशियल है, उन्होंने इस ट्रीटी को स्क्रैप करा दिया, ट्रीटी ऑफ सूरत. और जो ट्रीटी साइन की उसको बोलते ट्रीटी ऑफ पुरंदर. तो ब्रिटिश एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है, हम नहीं सपोर्ट करेंगे जिसको? रघुनाथ राव. बट इन 1777 नाना फडणवीस, हिज रिलेशनशिप बिकेम स्ट्रॉन्ग विद फ्रेंच. They were given a port on the western coast of India. So again war started. 1779 the British were defeated in the Battle of Wadgaon. उनको हराया गया और उन्होंने साइन भी की ट्रीटी ऑफ Wadgaon. But in 1781 the Marathas were defeated. Finally 1782 में जाकर उन्हें समझ में आ गया कि भाई इसमें कुछ ज्यादा हेडविन निकल नहीं रहा है. One single winner is not emerging. That's why it's better to now sign a peace treaty. And this treaty is known as Treaty of Salbai. एक्चुअली अभी मैं बस ऊपर से बात कर रहा हूँ. जब हम डिटेल में बात करेंगे तब तो भाई बहुत सारी चीजें आएंगी. किसने क्या कमेंट किया, किस तरीके से. लास्ट ईयर आपका मेंस में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. मेंस में क्वेश्चन आता है अपने ऑप्शनल के अंदर. द ट्रीटी ऑफ सालबाई वाज वेरी अनस्ट्रेटेजिक फॉर मराठास इन द लॉन्ग रन. बहुत अनस्ट्रेटेजिक थी. क्यों? अगले 20 साल के अंदर ब्रिटिश बहुत अच्छा अचीव कर लेते. दे आर एबल टू डिफीट मैसूर इन 1799. They are able to introduce permanent settlement by 1793. They are able to introduce the modern system of civil services, okay, under Cornwallis. Judicial system लेके आ जाते हैं. Subsidy lands
सिस्टम क्रिएट कर देते by 1798. Okay, and they're able to get it signed by Hyderabad, by Mysore, by even Allahabad by 1789. So not by 1799, and by 1801 by in the Awadh. तो बाय 1801 अवध ने मैंने साइन कर लिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश का रूल जो है बहुत स्ट्रांग हो गया। वही मराठा दे केप्ट ऑन फाइटिंग अमंग themselves. That's why on the one side there was no major achievement, on the other side the British they got 20 years of peace, और उस पीस के लिए उन्होंने पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन किया फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, and that's why Treaty of Salba is often considered as very strategic for the British for the long run, not for the short term. In the short term, they were the one who were responsible for the war, and they got nothing extra out of this war. But in the long run, it gave them a strategic time. 20 साल का टाइम मिल गया, और 20 साल के अंदर वो कहां से कहां पहुंच गए. And when they will meet the Marathas in the second Anglo-Maratha war, the Marathas will not be matched for the British. They'll be so strong at this point of time. The whole issue of the second Anglo-Maratha war, again, it is because of internal tension of Maratha. क्यों होगा? बाजीराव सेकंड, he was the son of रघुनाथ राव. तो जैसे फादर वैसे ही बेटा, ठीक है ना, सेम काइंड के कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके अंदर. द एप्पल हैज नॉट फॉलन फॉर फ्रॉम द ट्री, उन्हीं के आसपास था, उनके जैसा ही कैरेक्टर था बिल्कुल. तो क्या हुआ, ही वाज फाइटिंग विद हिज कन्फेडरेसी. देखो 4-5 पावर सेंटर एमर्ज करते हैं मराठास के अंदर. आई होप आपने नाम भी सुने उनके, है ना. कौन कौन है? सिंधियास हैं, है ना. सिंधियास फ्रॉम द रीजन ऑफ वेयर? ग्वालियर. होलकर फ्रॉम इंदौर. गायकवाड़ फ्रॉम बड़ौदा रीजन, एंड देन भोसले फ्रॉम द नागपुर रीजन. पूना से तो है हमारे पेशवा. 4-5 पावर सेंटर एमर्ज कर जाते हैं. Now what was done by Bajirao II? He was the Peshwa. What he did, he killed the brother of Yashwant Rao Holkar. उनके ब्रदर को मार देते हैं. उनका नाम था विथुजी. Holkar, he comes in for revenge, and in revenge he is able to defeat the Peshwa. वो पेशवा को डिफीट कर देते हैं. Now Peshwa was someone who was very afraid कि गद्दी तो छोड़ो, जान भी जाने वाली है ना, भागा किसी तरीके से. So he went towards British, और वहां जाके साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ बासिन. ठीक है, द ट्रीटी ऑफ बासिन वाज साइंड बाय हिम ऑन 31st of December 1802. 31st of December 1802 कौन सी ट्रीटी साइन करते हैं? ट्रीटी ऑफ बासिन. इट वाज अ सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी, एंड एज पर द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी, जैसे इन्होंने ये साइन किया, द होल मराठा किंगडम नाउ केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, but the Marathas were not going to accept it. That's why the signing of this Treaty of Basin led to the beginning of the Second Anglo-Maratha War. So from 1803 till 1805, all these independent Maratha power tried to fight with the British, but they were defeated one after the another. Only one power remained, that was Holkar. उनके साथ एक अलग से treaty sign करते हैं, Treaty of Rajghat. तो वो defeat नहीं होते. But largely, the power of the Marathas was completely taken down by this war. And since he himself, Bajirao II, had accepted the Treaty of Subsidiary Alliance, his troops were now pensioned off. His troops were now taken down. ठीक है ना, तो पूरे का पूरा जो है आर्मी डिसबैंड हो गया. Now he was not having any power. There used to be some irregular soldiers by the name of Pindaris. They used to fight with the Marathas. These Pindaris, they used to fight with the Marathas. उनके साथ ही फाइट किया करते थे. But now after this treaty, everything was gone. अब इनके पास कुछ बचा नहीं था. They started looting and plundering across the highway. और उस टाइम एक नए नए गवर्नर जनरल इंडिया में आए in 1830. See the entry of Lord Hastings. So Lord Hastings, now he wanted that such kind of law and order problem, they should be taken care of immediately. So he met with the Maratha leaders and told them, भाई अगर आप इनको support करोगे, तो I will not be happy with that. So he started an operation against the Pindaris, and then he started persuading these Maratha leaders of multiple areas that you, all of you, have to sign a new treaty, so that you cannot help Pindaris even officially. Your assurance is not enough. I need a signature on a new treaty. And when this happened, it affected the ego of Marathas. And Bajirao II, he led the banner of revolt, but by this time the British were too much. The British had already defeated each and every power, and without any kind of coordination, without any kind of real fight, you were not going to win against the British.
Led to the end of the Third Anglo-Maratha War, in which again these powers were defeated. Peshwaship was abolished, and Peshwa was sent on pension, and he was sent to Bithur. और उसके बाद इनके जो adopted son है, his name is Nana Sahib. He will fight in the revolt of 1857 for what? Pension. जो एक टाइम के पेशवा हुआ करते थे, फिर बाद में पेंशन के लिए लड़ाई लड़ेंगे. इतनी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे 1857 में, है ना, पेंशन के लिए, जो आज हम सब लोग आज तक लड़ रहे हैं. इंडिया में एक ही चीज की लड़ाई है सबसे ऊपर, पेंशन दे दो बस. दिस इज द एंड ऑफ वॉर. दो छोटे छोटे एरियाज और बचते हैं, वन इज सिंध एंड अदर इज पंजाब. तो देखिए एक ब्रॉड आइडिया मैं आपको समझाता हूं. इनिशियली द बिगेस्ट राइवल ऑफ द ब्रिटिश वर फ्रेंच. द फ्रेंच after 1815 were not a major threat. Why? Because Napoleon was defeated in the Battle of Waterloo. Napoleon was defeated. But after French, the next threat which emerged was Russia. Russian Empire was expanding. By 1820s, they were able to defeat Persia. They were able to capture territories. They were able to get a lot of territory in Central Asia. That's why the next rival which now emerged for the British was Russia. And this British and Russian rivalry is known as the Great Game. This is known as the Great Game. ये start हो गई. In fact, once they were able to get a lot of influence in Persia. Persia means Iran. ठीक है, ईरान में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया रशियंस का. The British thought, what's the perfect way to ensure that Russian never comes towards India? तो सीधी बाउंड्री किसके साथ लगती है ईरान की? अफगानिस्तान. The British fought a war in Afghanistan from 1839 to 1842, where they were trying to install a person by the name of Shah Shuja on throne. ठीक है, कोशिश कर रहे थे, but this did not work out, है ना. And finally the British lost in 1852. The next area which they tried to then target, it was the region of Sindh. ठीक है, सिंध आप सब लोग जानते हैं. ठीक है, this is the area of Sindh. Now Sindh plus Punjab, these were the two states. The first line of defense was Afghanistan, but that could not happen. लोगों ने सोचा अब हम कहाँ जाएंगे? Second line of defense. So first they attacked Sindh region in 1843. The person who was responsible for capturing, his name is Charles Napier. Charles Napier, he said that we have no right to seize Sindh, but yet we shall do so. And it will be a humane piece of rationality. इन लोगों के साथ हमारा हमेशा अच्छा रिलेशनशिप रहे. The people of Sindh, जो उनके रूलर्स हैं, उनको बोलते थे आर्मीज. These armies signed a treaty with the British on multiple occasions. और हर बार एक ही चीज होती थी कि भाई हम लोग क्या हैं, दोस्त. The people of the Sindh, the rulers of the Sindh helped the British even during the war with Afghanistan, even though they were not required to help them officially. But फिर भी उनका सपोर्ट दिया. बट आप सब लोगों को पता है, the British were British. They only cared about one thing: we are here to take care of our strategic interest. We are not here for the sake of taking care of anything else. That's why we took the charge. Okay, and in 1843, Sindh was merged into British Empire. और लॉजिक सिर्फ एक था. It is known as Russophobia. कि भाई they were always afraid कि next कौन आ सकते हैं यहाँ पे? Russians. So to target that, they captured the Sindh region. The person who was responsible for this is Charles Napier. देखिए उनकी डायरी है. He himself was not convinced of the righteousness of annexation. खुद थे थोड़े से दुखी थे, but फिर भी लिखा that we have no right to seize over Sindh, because these people have been always good with us. Yet we shall do so in a very advantageous, useful, humane piece of rascality. It will be.
That's exactly what it was looking for. Yes. Hmm. Huh. Huh. एक्चुअली बलूचिस्तान जो था उसको अलाउ कर रहे थे दैट यू कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट. इट वाज बीइंग अलाउड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. बलूचिस की काफी लीडर्स इंडिया को बोल रहे थे कि आप हम आपका पार्ट बनना चाहते हैं, बट इट वाज रिजेक्टेड बाय इंडियन लीडर्स. भाई जोग्राफिकली कंटिन्यूअस नहीं है. जैसे वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दूर दूर जाता इंडिया, और फिर बलूच जो थे उनका जो एक कल्चर था वो इंडिया के लोगों से उतना मैच करता नहीं था. ठीक है ना, उतना कुछ मैच करता नहीं था. दैट्स वाई हमने उनको उतना एक्सेप्ट किया नहीं उस time पे. ठीक है, एक एक आया था प्रपोजल, बट इवेंचुअली और वहां भी 4 पार्ट में डिवाइड था बलूच वाला जो रीजन. ठीक है, जो उनमें से जो सबसे स्ट्रांग थे उनको जिन्ना ने छोड़ दिया, बाकी 3 को इंड्यूस करके इन्होंने क्या किया, साइन करवा लिया. ठीक है, फिर बाद में क्या किया, चौथी जगह भी अपने क्या भेज दी, ट्रुप. तो इसलिए आज तक जो बलूच का पूरा इशू है वो इसी वजह से है. और जो बलूच पीपल है ना वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है. बलूचिस्तान जिसको हम बोलते हैं, द वर्ड बलूचिस्तान, इट कवर्स सम एरिया ऑफ इवन ईरान, वो भी आता है उसके अंदर. इसलिए ईरान चुप रहता है. इवन दो जो अफगानिस्तान के अंदर भी थोड़ा सा एरिया आता है बलूच का, पाकिस्तान में भी आता है और ईरान के अंदर भी आता है. ऐसे ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं. जैसे नागाज को देखो, नागाज इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो, नागा इज अ पार्ट ऑफ म्यांमार ऑल्सो. तो ऐसी काफी कम्युनिटीज हैं जिनको सेल्फ डिटर्मिनेशन मिला नहीं, और उनमें से एक है बलूचिस्तान. एंड बलूचिस्तान एक्चुअली जो सबसे बड़ा बैड लक था वो यही था दैट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वर एम्बिशियस. इंडिया को देख के पाकिस्तान को लगा सारी प्रिंसली स्टेट्स इन्होंने ले ली, हमारे पास कुछ छोड़ नथिंग, नोबडी वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान. एंड दैट्स द रिजल्ट ऑफ दिस. उन्होंने पूरे कंपटीशन में दे अटैक्ड बलूचिस्तान, दे आल्सो अटैक्ड कश्मीर. दैट्स हाउ इट हैपेंड. देखो, हिस्ट्री इज फ्रॉड. द ब्रिटिश हिस्ट्री सब फ्रॉड है. ठीक है, किसने कौन सी ट्रीटी साइन करी, किससे क्या होने वाला था. अब सिंध वाले टॉपिक में ही देखो, सिंध में इन्होंने ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप 1820 में साइन की, 1832 में साइन करी, फिर भी जब मन किया इनको कैप्चर कर लिया इन 1843. तो ब्रिटिश कभी भी इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते कि ट्रीटी आर सैक्रोसेंट इन नेचर. बट अब कोई मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, उनके पास तो सिर्फ वही है ना, दे हैव नथिंग एल्स. अब आज मान लीजिए हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स बहुत सारे, तो हमने भी कोई छोटा मोटा तो काम किया नहीं. हमने 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर मर्ज किया है. हमने तो कुछ को तो आर्म ट्विस्ट किया ही है. वो पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस में, पोस्ट इंडिपेंडेंस में होंगे. इनफैक्ट एक टाइम पे जोधपुर के राजा, ठीक है, जोधपुर के जो राजा थे, ही वांटेड टू इवेंचुअली गो टुवर्ड्स पाकिस्तान. इवन जैसलमेर ब्लैंक चेक दिया गया था, ब्लैंक चेक वाज गिवन, बट इवेंचुअली बाद में उनको समझाया गया, बुझाया गया और फिर इंडिया का पार्ट बनाया गया कि वहां से तो आपका कल्चर मैच नहीं करता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें. तो ऐसे हर जगह है यार. मतलब wherever you go you will find some people who will be disgruntled. But in case of Balochistan, Jinnah himself agreed that you can stay independent, and then Jinnah changed. That's the biggest issue. पहले एक्सेप्ट कर लिया था जिन्ना ने भी कि आप इंडिपेंडेंट रह सकते, बट देन ही चेंज्ड बैक. वापस जो बलूच के 4 स्पेसिफिक एरिया हुआ करते थे, उनमें से 3 एरियाज के साथ उन्होंने मीटिंग सेट की, साइन करवाया. जो सबसे अग्रेसिव थे उनके लीडर, उनको जानबूझ के नहीं लिया बिकॉज वो हमेशा मना कर देते. And then by using the will, it was signed by the three, he justified that Balochistan is now part of Pakistan.
आप ये समझो ना, कौन मतलब जो बलूच लोग हैं, पाकिस्तान कहाँ ठीक था? देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, वो उनको जस्टिफाई करने का एक ही तरीका है, भाई हम इंडिपेंडेंट थे एट द टाइम ऑफ 1947, सबने एक्सेप्ट कर लिया था इस फैक्ट को, लेकिन आपने हमारे साथ गलत किया। देखो, सेल्फ डिटर्मिनेशन के जो डिमांड हमेशा रहेंगी, इंडिया में नहीं है कि कुछ कम्युनिटी जो मांगती हैं। हाँ, खालिस्तान वाला इशू कितना बड़ा था, असम में हुआ है इशू, हर जगह हुआ है। तो जस्टिफिकेशन कुछ नहीं होता व्हेन पीपल देमसेल्फ आर नॉट एक्सेप्टिंग। तो दो तरीके हैं, या तो उनको आप प्यार से मनाओ, जैसे इंडिया का तरीका अलग है। इफ यू सी इन केस ऑफ इंडिया, पंजाब में खालिस्तान की डिमांड बन गई थी, ठीक है, लेकिन उस टाइम जितनी वायलेंस थी उसको तो हमने कभी एक्सेप्ट नहीं, वी वेंट अगेंस्ट इट ना। विंड्रा वाला जो पूरा केस आप सब लोगों को पता होगा, इमरजेंसी किस तरीके से वहां पे हुई, ठीक है। लेकिन बाद में आज पता भी चलता है कि पंजाब के अंदर कभी हुई होगी इस तरीके से। वी एक्सेप्टेड द कल्चर, वी एक्सेप्टेड एवरीथिंग, वी ट्रीट, यस। हाँ, कुछ कुछ एरियाज में अभी भी है, जैसे अब नागा ट्राइब को अगर आप देखोगे, नागा ट्राइब जो है वो सिर्फ नागालैंड में है, कुछ लोग उसके जो है असम के अंदर भी है, कुछ लोग जो है वो अरुणाचल में है, कुछ लोग मणिपुर के अंदर भी है, और कुछ लोग म्यांमार के अंदर भी है। हाँ, तो इसलिए वो बोलते हैं उनकी डिमांड आती है ग्रेटर नागालैंड की। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन देखो एज अ प्रिंसिपल हर किसी में बहुत फेमस, बट ये एक्सेप्ट नहीं हो पाया है, एक्सेप्ट नहीं हो पाया बहुत कम जगह। जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश इज वेरी लकी कि इंडिया साथ खड़ा हो गया। बांग्लादेश इज वेरी लकी, बांग्लादेश कभी बनता थोड़ा ना अगर इंडिया नहीं होता। बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड, इट वाज गुड फॉर अस फॉर स्ट्रेटेजिक रीजन आल्सो, बिकॉज एटलीस्ट एक जगह से ही अब दिक्कत आती है, नहीं तो हम एक ऑपरेशन सिंदूर उधर चलाना पड़ता, इधर दूसरा ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ता, दो दो जगह टेंशन होती है। अब एटलीस्ट एक ही जगह करके काम हो जाता है ना हम लोगों का, तो वो हमारे भी हित में था। लेकिन बिकॉज ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, बिकॉज ऑफ द बंगाली कल्चर, इट हैपेंड इन 1970, ठीक है। लेकिन अब उसको तो कोई क्वेश्चन नहीं करता। अभी आ भी रहा था कुछ दिन पहले, एक आया था आर्टिकल कि भाई जो करंट अभी शेख हसीना वो वहां से आउट करके भगा है, इंडिया ही तो आई है वो, शेख हसीना तो प्राइम मिनिस्टर जो भी उनकी है, तो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, और उसके खिलाफ पब्लिक ओपन ट्रायल्स चल रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। दिस हैज बीन डन बाय द फैक्शंस फ्रॉम पाकिस्तान, जिन्होंने फंडिंग की थी पूरी की पूरी एजिटेशन, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये बदला है 1971 का, बिकॉज हिज हर फादर ओनली वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, शेख मुजीबुर रहमान, ही वाज द वन हु लेड द एजिटेशन, जिन्होंने बांग्लादेश को बताया। वो करते रहो, इसका कोई अंत नहीं है। बेस्ट चीज क्या है ना, हिस्ट्री से लर्न करो, डू नॉट गेट इमोशनल विद इट एंड मूव फॉरवर्ड विद इट, दैट्स द ओनली पाथवे। जैसे हम लोग भी हैं, ऐसा भी पॉसिबल होता अगर मान लीजिए इंडिया इंडिया एक सिंगल एंटिटी नहीं बनती 1947 में सपोज, तो हम सब लोग अलग अलग प्रिंसली स्टेट में भी होते आधे लोग, है ना? तो फिर कहते हम तो वहां के सियासत के राजा के इतने इंपॉर्टेंट लोग, बट वी बिकेम अ सिंगल नेशन। और ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ना हमें बोलना चाहिए कि दे डिड अ वेरी वंडरफुल वर्क, that we are able to pool resources and we are a bigger entity. Same goes for USA. USA क्या था? Initially there were 13 colonies who were fighting against the British. But starting from 1783, they went for complete western expansion. एक एक करके, और आज 50 स्टेट है, इतने बड़ा एरिया है यूएसए के अंदर। तो जब आप बिगर यूनिट होते हो ना, रूम फॉर पोटेंशियल डेवलपमेंट इंक्रीज है, एटलीस्ट स्टेबल सिस्टम रहता है। वही अगर छोटी छोटी स्टेट होती तो उनके बीच में फॉरेन डिप्लोमेट्स भेजने में दिमाग खराब हो जाता है, इनसे क्या ही डिप्लोमेसी करेंगे इनके साथ बैठ के, इतने लोग। अब इंडिया अच्छा है ना, एटलीस्ट वी हैव ओनली वन बिग एंटिटी। तो अच्छा तो यही रहता है एट द इंटरनेशनल लेवल, दे शुड बी सेल्फ गवर्निंग एंटिटीज, बट लिमिटेड वंस, अनलिमिटेड नहीं होनी, वो फिर प्रॉब्लमेटिक ही रहता है। एनीवे, कभी बाद में आराम से बात करेंगे उसके बाद, ठीक है। द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, इट इज अबाउट पंजाब। पंजाब, it was built by Raja Ranjit Singh from 1799 to 1839. He died in 1839. Thereafter, Punjab was very unstable. In fact, after him, not even a strong leader came to power. And the only personality who was strong enough was Nonihal Singh. But he was eventually murdered. So, two wars were fought. First from 1845 to 46. This war was fought
because there was a treaty of Amritsar which was signed between the British and the Punjab. 1809 में वो treaty sign हुई थी. As per this treaty, Satluj was the demarcation of the boundary between these two. सतलुज को डिमार्केट किया गया था एज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर. अब हुआ क्या, एज ऑल ऑफ अस कैन नो, in 1845 the Sikh army has become completely indisciplined. In fact, they started interfering in the civil matters, and they were the one who thought that the British are coming with the big army. Eventually the Sikh army, it crossed the river Sitluj, the boundary line, and that's why the British fought with the Punjab. Punjab was defeated. Treaty of Lahore was imposed upon them. It was a subsidiary alliance treaty. Later on, some of its provisions were reformed by the Treaty of Bharawal in 1846. Okay. Later on, revolt was raised by few people from the region of Punjab. Like there was a Diwan Malraj. Okay, the Diwan Malraj, he started the revolt. But once the revolt started, Dalhousie was already in India. Dalhousie was a person who only believed in one thing: capturing territories. So he came to India in 1848 when he saw the opportunity. When he saw the opportunity of capturing Punjab, he was the most happiest person on the earth. He said all territory should be captured. Okay, one pretext or another. ज़्यादा चिंता मत करो. In fact, 1848 से लेके till 1856, till he remained in India, he captured around 50% of what was captured by the British in last 90 years. 1757 से लेके अगर 1848 तक की territory एक तरफ कर दें, and 1848 से 1856, he captured half of what was done by the whole of Britain together in 90 years. डलहौजी 8 साल में करके चले. And all of you know that he was infamous for the doctrine of lapse. ठीक है ना? What is the meaning of doctrine of lapse? Doctrine of lapse means that if you do not have a natural hair, you cannot adopt. And if you adopt, then you have to take the permission from the British for its acceptance. तो बहुत से जो सबसे famous case था was the case of झांसी. ठीक है, but बहुत सारी states थी. सतारा ऐसे ही किया था, जैतापुर हो गया, संभालपुर हो गया, ठीक है, even नागपुर हो गया. All of them, they were captured under the treaty of, or under the doctrine of lapse. Then he also captured Awadh in 1856 on the pretext of misgovernance. He also captured, in fact, Myanmar. Okay, so he was someone who believed in the policy of warfare, who believed in the policy of doctrine of lapse, who believed in using any excuse like the pretext of misgovernance for capturing the whole Awadh region itself. Dalhousie was the one who was responsible for capturing Punjab. He did not even look कि भाई कौन सही है कौन गलत है, and he captured it by 1849. That's about the British expansion. That's about the end of the European entry into India. बस थोड़ा सा एक स्टोरी की तरह मैंने आज कोशिश की आप लोगों को बताने की. कुछ हमने बेसिक एस्पेक्ट्स को टच किया, जैसे लाइक व्हाट इज मॉडर्न इंडिया. ठीक है, कोशिश किया, थोड़ी सी एक स्टोरी समझी, कौन कौन इंडिया में आए, किस तरीके से. टुमारो वी विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. अगला जो हमारा पार्ट है, हम लार्जली बात करेंगे नेशनल मूवमेंट के बारे में, और थोड़ा सा ब्रॉड डायमेंशंस में आपको समझाऊं. दिस इज ब्रॉडली अ मिलिट्री डायमेंशन. Starting from 1820s, we see the beginning of the social reforms. Then we see about the policies of the British, क्या क्या उनकी economic policies रही, and then the rise of Indian nationalism. And चार part में हम nationalism को पढ़ते हैं. First is moderate, second is extremist, third is the Gandhian nationalism, and then the nationalism linked with the left, the socialist and the communist. ठीक है ना? और फिर उसके साथ में एक और दो dimension, that is revolutionary extremism. तो ये सारे हम डायमेंशंस कल एक बार ब्रॉडली डिस्कस करेंगे. देखिए, नेचुरली दो क्लास के अंदर मॉडर्न इंडिया से आप जस्टिस तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बट एक स्टोरी की तरह एंट्री करने के लिए इतना जरूरी है ताकि आप सब लोग प्रोसेस को समझ लें. ठीक है, रेस्ट जो पूरी डिटेल क्लासेस हैं वो नेक्स्ट मंडे से चालू हो जाएंगी. कल मिलते हैं सेम टाइम. ठीक है, तो टुमारो विल मीट एट द सेम टाइम 3 PM. विल कंटिन्यू फ्रॉम